I hope you have understood very well the problems on proportional controller and the problems on the calculation of this closed loop transfer function. And by now, you know that what are the differences between servo closed loop transfer function, regulatory closed loop transfer function, and the open loop transfer function. Okay, and the understanding of controllers and proportional band is also very much clear. I asked you a question that in which case I can write proportional band is equal to 100 by Kc. I explained this a little bit in the previous lecture also. I hope you have understood that proportional band can be understood as 100 by Kc. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट में ये फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना है अनलेस क्वेश्चन में यही एक ऑप्शन हो, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है. ओनली सी हाउ एक्चुअली हाउ. सपोज देयर इज अ कंट्रोलर. मैं ये बात आपको क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर कई जगह या कई लोग या कई बुक्स ऐसा बताएंगी, ठीक है, प्रोपोर्शनल बैंड इज इक्वल टू 100 by Kc. ऑफ कोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kc, but that proportionality constant is not equal to 1. So I can't say proportional band is equal to 1 by Kc into 100. Okay. What is the thing? That if this range is, let's say, 4 to 20 milliampere and this range is 3 to 15 milliampere. है ना, आज का टॉपिक अलग है लेकिन एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि why proportional band is written as 100 by Kc sometimes. I have done my own research on this and I have found a specific reason. That is only possible explanation. In that case, only proportional band can be written as this. Okay, how? Suppose it is given in the problem that when the error goes, it is given. What is given? It is given that error goes from, let's say, 5 to 10 and CO goes from 3 to 15. Fine, suppose this is the situation. 3 to 15 is the complete range of controller output. So I can say that Kc is equal to change in output. So 15 minus 3 divided by change in input, 10 minus 5. Right? And that will be 12 by 5. That is the value of Kc. Suppose I am calculating proportional band, %PB. %PB is the error which is changing the controller output through its full scale. मतलब error में कितना change हो जो कि कंट्रोलर आउटपुट को पूरा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, आई मीन मिनिमम से मैक्सिमम पूरा जो है चेंज करता है या मैक्सिमम से मिनिमम. सो इट इज गिवन दैट फॉर दैट एरर मस्ट चेंज फ्रॉम 5 to 10. It means %PB will be written as, suppose if I say that error is changing from 5 to 10, so this is the change in error which is causing the controller output to change. अगर इस एरर का परसेंटेज, सी दिस इज द चेंज इन इनपुट, if I calculate its percentage on the basis of maximum possible change of input, then it will become same as I have discussed before the explanation of proportional band. But suppose अगर इसकी percentage मैं इसके basis पे निकालूं, I am calculating the change of error percentage on the basis of maximum possible change in output, right? Then you can see that they are reciprocal of each other. Or you can say that it is possible that the output range and the input range are same, then also this will be the formula %PB is equal to 100 by Kc. Otherwise, it is not always applicable that proportional band can be calculated like this. So we can say that this formula is only applicable if the input range or the output range is same. Or you can say that when we are calculating percentage change of input on the basis of maximum range of output. However, ये रीजन मुझे उतना डाइजेस्ट नहीं होता कि आप इनपुट के चेंज का परसेंटेज आउटपुट के मैक्सिमम चेंज के बेसिस पे निकालो. देयर इज नो मीनिंग. whenever you find percentage of something, you find it with respect to the same nature of the things. I mean, अगर आप इनपुट का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनपुट की परसेंटेज इनपुट के बेसिस पे निकालेंगे, आउटपुट के बेसिस पे नहीं निकालेंगे. So what is the better explanation? I think I explained this in the previous lecture also, that if the input and output have the same range, suppose this is also this 3 to 15, in that case this will be 15 minus 3 and the result will be % proportional band is equal to 100 by Kc. So in GATE exam, if they simply ask you find proportional band, use that explanation, right? And don't directly apply % PB is equal to 100 by Kc unless the options are such that there is no other,
I mean, you are getting answer only by applying this, then only you do this. Otherwise, what is the meaning of proportional band? I explained. ठीक है? तो इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करते हैं, इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है? And I also asked that can proportional band be greater than 100%? The answer is yes. Now, what is the meaning of proportional band greater than 100%? Proportional band greater than 100% means error should change by more than its maximum range. है ना? Proportional band 100% means suppose the proportional band is 200% and the range of error is 4 to 20. Means the error is having a range of 16, 4 to 20. So if the proportional band is 200% means the error should go from 4 to, I mean this is 16 and then 16 and 12, that is 26 and 28. The error should go from 4 to 28. Error should go change by 24 units, then only controller output will go from minimum to maximum. But is it possible for error to change more than 100%? No. It means when the proportional band is 200%, controller output कभी minimum से maximum जाएगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं. That is the meaning of 200%. Of course, आप बोलोगे सर इसका मतलब proportional band 200% नहीं हो सकता है. Proportional band can be 200%. If proportional band is 200%, I can say that Kc is very low. If Kc is very low, it means आप error को जब तक बहुत ज़्यादा change नहीं करते, तब तक प्रोपोर्शनल तब तक कंट्रोलर का आउटपुट मिनिमम से मैक्सिमम सैचुरेशन तक नहीं जाएगा. एंड एरर को बहुत ज्यादा चेंज करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसकी एक देयर इज अ डेफिनेट रेंज फॉर दिस एरर टू द कंट्रोलर. फाइन. सो विच टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ? दैट इज क्लोज्ड लूप एनालिसिस. क्लोज्ड लूप एनालिसिस. What is the meaning of closed loop analysis? I'm going to take certain examples, certain cases. I mean, I will take the case of suppose a proportional controller controlling a first order system and I'll make a control block diagram. Fine. Then we will do the closed loop analysis of the servo transfer function, regulatory transfer function. What is the meaning of closed loop analysis? We will analyze the closed loop transfer function order. We will try to find out the offset, right? We'll see whether the order has changed or not. Similarly, I will keep on changing the controller and changing the process and then we can do that. So closed loop analysis, let us take case 1, problem 1. P controller controlling a first order system. Controlling a first order system. Fine. Can you make a block diagram for this? Of course, I guess you can. Right. Suppose this is a YSP. Right. YSP goes to the comparator. Fine. Then there comes, I'm not writing GSP. Suppose GSP is equal to 1. Then this is GC. GC, if it is a P controller, then I can write GC is equal to KC. It is KC. And suppose it is controlling a first order system. So controller goes to the valve or the final control element GF. If it is controlling the first order system, then it will be let's say it will be Kp by tau ps plus 1. Fine, it is Kp by tau ps plus 1. So GC, GF, GP, and then there is a disturbance plus GD plus transfer function GD, D bar S, and this is the output Y bar. This is YSP bar. Okay. If it is a feedback control loop, then you are having a transfer function GM as well. GM as well. Fine. Okay. Now for derivations, many times we simplify the problem by assuming that the measuring element is having unity transfer function or the measuring element is having very fast dynamics. Similarly, the final control element is having very fast dynamics. These are the assumptions which can be made for simplifying your calculations. Correct? Suppose I can let us assume that GF is equal to 1
and it is a unity feedback system. So GM is equal to 1. I think I told you that GM is equal to 1 means unity feedback system. Okay, unity feedback system. Correct. Now, what is the motive here? The motive is I want to find that what is the servo closed loop transfer function or a regulatory closed loop transfer function. I hope you can directly write, okay? Servo closed loop transfer function. What is servo closed loop transfer function? लिखना सिखाया है ना? Now no need to do that A, B, C, D and then you'll write the reduce the block diagram. Direct you can write for servo closed loop transfer function means y bar by ysp bar s, ठीक है, is equal to pi of forward path. What is forward path? Kc, correct. Gf is equal to 1, otherwise kf or gf, whatever transfer function it is, that should be here, multiplied by kp by tau ps plus 1. That is the multiplication of forward path, I think, correct. Kc kp by tau ps plus 1 divided by 1 plus product of all these transfer functions. Now these two transfer functions are this 1, therefore 1 plus kc kp tau ps plus 1. This is the servo closed loop transfer function. We can rearrange and make this simple to look. Y bar s ysp bar s, इसको rearrange कर लो, है ना, y bar s by ysp bar s. So if you take LCM, tau ps plus 1 will be cancelled and it will become kc kp divided by tau ps plus 1 plus kc kp. Tau ps plus 1 plus kc kp. Now whenever you write a closed loop transfer function, मुझे ये देखना है, what are the, this is the servo closed loop transfer function. What are the observations that I have to find here? The observation or the conclusions, the point I'm writing here. First of all, try to rearrange this transfer function and let's see what is the order. वैसे तो देखो इसको आप s की डिग्री देखो. The power of s is 1 means the order of this closed loop means this entire block diagram. I'm not just talking about this order. इसका order क्या था? Order of the process when it was not controlled. What was the order of the process? It was first order only. And it was first order. Okay, when it was not controlled. Okay, so first thing that this transfer function, the servo closed loop transfer function can be written as, can be, ये एनालिसिस यही है कि जब देखो क्लोज लूप का मतलब क्या होता है. क्लोज लूप मींस कंट्रोलर इज नाउ वर्किंग, ओपन लूप कंट्रोलर इज नॉट वर्किंग. आई मीन कंट्रोलर इज देयर बट उसको कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा, सो इट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन. सो द कंट्रोलर, देयर इज नो मीनिंग ऑफ कंट्रोलर प्रेजेंट इन द, आई मीन अगर ओपन लूप है तो कंट्रोलर लगा भी दोगे, कंट्रोलर काम नहीं करेगा बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग एनी फीडबैक. भाई कंट्रोलर को पता ही नहीं लगेगा कि वहां क्या गड़बड़ हो रही है तो एक्शन कैसे लेगा. वेरी सिंपल थिंग. तो फीडबैक, अगर फीडबैक लूप ओपन है, in that case this controller is not going to do anything, वो बस ऐसे ही खड़ा रहेगा, है ना. So the servo closed loop transfer function can be written as, you can see that I can divide this entire equation by 1 plus kc kp now. So I can write this equation y bar s ysp bar s is equal to kc kp divided by 1 plus kc kp and this whole divided by tau p by 1 plus kc kp, correct, tau p by 1 plus kc kp multiplied by s plus 1. ऐसा लिख सकता हूं. Now consider this. Can you say that still proportional controller लगाने के बाद loop को close करने के बाद, after employing proportional controller, after closing the loop, now still the transfer function has the same order as it was before. Right? So we can say that's what we have learned कि proportional controller कभी भी system के order को नहीं बदलता है. Means the order of the system in the absence of P controller and in the presence of P controller remains same. Right? So you can say that the order of the closed loop transfer function is 1. है ना? First order system, some gain. Of course, you can say that this can be termed as some effective gain. So this is some kind of k dash, and this
thing can be termed as some kind of tau p dash. You can say that the transfer function is k dash by tau p dash into s plus 1, right? So what is the first observation about this? ये इसी observation को कहते हैं closed loop analysis. आप एनालाइज कर रहे हो कि लूप क्लोज करने के बाद, कंट्रोलर लगाने के बाद क्या ऑर्डर में चेंज हुआ, आपने देखा कि नहीं हुआ, बट गेन हैज चेंज्ड, इफेक्टिव टाउ हैज चेंज्ड. फाइन. इसका मतलब कि पी कंट्रोलर इज नॉट अफेक्टिंग द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. P controller, this is what we have learned. I told you that all those points I'm going to prove mathematically also. P controller does not affect the overall order of the system. Overall order of the system. This is what we have learned. One more thing. Closed loop analysis में और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप इसमें एनालाइज कर सकते हो. Can you tell me that when the loop was not closed, what was the open loop transfer function? Let's see. Second point, the open loop transfer function, बताइए, assume this to be equal to 1 and this to be equal to 1, that is kc kp by tau ps plus 1. अच्छा, one more thing, कि क्या ये चीजें फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही वैलिड है? No, of course not. But most of the time we take first order as our example because it is easy to prove, it is easy to solve, it is easy to rearrange also like this. But मैंने थ्योरी में आपको लिखवाई दिया कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगने से पहले जो ऑर्डर था वही ऑर्डर उसको लगाने के बाद आएगा. दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन kc kp by tau ps plus 1, right? So you can compare that as compared to the open loop transfer function. Here, what was the gain? The gain was kc kp and the time constant was tau p. So as compared to what was the order of open loop transfer function? The order is 1. The order is 1, right? So I can say that, I can say that the gain, that is your third point, the gain of closed loop transfer function. What is the gain of closed loop transfer function? kc kp by 1 plus kc kp. And what is the gain here? kc kp. The gain of closed loop transfer function is less than the gain of open loop transfer function. The gain of open loop transfer function. And the time constant, the effective time constant, which is tau p dash, the time constant of closed loop transfer function is less than the time constant of open loop transfer function, is less than the time constant of open loop transfer function. And what happens if time constant is less? Means the response is fast. तो मतलब जब कंट्रोलर काम कर रहा है when the feedback loop is closed, the response is definitely fast. You can see that the effective time constant in the presence of this feedback loop closed is tau p divided by 1 plus kc kp. The time constant of CLTF is less than the time constant of OLTF. ठीक है? These are the small observations कि जब आपने लूप को बंद कर दिया, लूप को बंद करने से पहले क्या चीजें थी और बाद में what is the effect of actually closing the loop. This is called closed loop analysis. So proportional controller, you can see yourself, is not changing the order of the system, right? Now the question arises, sir, okay, if this is so, can we also say that, can we also calculate the offset here? Let's take the offset, let's calculate the offset. I think this much space is not sufficient for calculating offset, or yeah, we can do that. Okay, let us calculate offset. Offset कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑफसेट मींस एरर. कोई फॉर्मूला रटने की देखो जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफसेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर स्टेप चेंज इन एरर, बिकॉज अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू डिफाइन ऑफसेट. तो आप चिंता ना करें, वैसे गेट में बोल देता है कि स्टेप चेंज है, कितने मैग्नीट्यूड का है, क्या है, बट इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर स्टेप चेंज. लेट्स से दैट व्हाट वी आर डूइंग, लेट यूनिट स्टेप चेंज, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, unit step change. कहाँ पे? We are talking about servo problems right now, so let us talk about unit step change in set point. Unit step change in set point. Correct? So let unit step change in set point. Then can you tell me what will be the formula?
I told you the formula is change in set point minus change in ultimate value. So what is the change in set point? 1. What is change in ultimate value? By final value theorem, S into I told you y bar s. What is y bar s? Y bar s, ध्यान से सुनना, देखो मैं लिख नहीं रहा कुछ. S into y bar s. Y bar s is x bar s. What is x bar s? X bar s is the how much change you have done in the input, and that is 1 by s. Multiplied by gs. What is gs? Closed loop transfer function. Which closed loop transfer function? Servo or regulatory? Because I am changing the set point, so I should use servo transfer function. What is servo transfer function? This is servo transfer. I can also use in this form. Doesn't matter. आपको final result पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. आप इसको use कर लो या इसको use कर लो. What is servo transfer function? KCKP divided by tau PS plus 1 plus KCKP. ये समझ आया? S tending to 0. Why? We are finding the infinite. T tending to infinity, S tending to 0 final value. Of course, you can see here what is this. So this is, and S tending to 0 you can substitute here. So this becomes 1 minus KCKP divided by 1 plus KCKP. So 1 plus KCKP minus KCKP, what will be this? 1 minus KCKP divided by 1 plus KCKP. I think this is fine. Okay? That is the offset. You can, of course, you can take LCM here, and I'm writing here that the offset you are getting is, I'm writing here that is 1 plus KCKP minus KCKP. That is 1 by 1 plus KCKP. That is the offset for, let me check, this is S into YS, which is X bar S into GS, and S tending to 0. Okay, so that is KCKP S into YS by KCKP. So 1 plus KCKP. 1 minus this S into YS, that, okay, that cancels out. 1 minus KCKP by 1 plus KCKP, and that becomes 1 by 1 plus KCKP. This is the offset. So we have also discussed कि अगर आप proportional controller use करोगे तो offset आएगा. क्या ये formula रटना है? देखो, I told you that this formula is specific for this problem. Why? Because I have taken GF is equal to 1, JM is equal to 1. So याद तो ऐसा कुछ याद रखने जैसा नहीं है. You can also always derive. Don't make any mistake here. Here there are more chances of making mistake. Sometimes I told you, sometimes we take this as 0. Sometimes we use here regulatory transfer function instead of servo transfer function. That is why you make error in this error calculation. Okay. So आपने देखा कि if you increase the value of KC, if you increase the controller gain, then the value of offset is going to decrease. That's what we have discussed. So as KC increases, the offset decreases, right? है ना? तो यहाँ से दिख जाता है कि अगर आप gain बढ़ाओगे, the offset is going to decrease. That is the meaning of closed loop analysis. You are controlling a first order system with a P controller, and then you are analyzing कि क्या क्या हो रहा है. और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें इसमें आप analyze कर सकते हैं. Okay? You can talk about gain. You can try to make the graphs. Okay? Then we have discussed about that, what happens to tau P, then what is its result role in the graph, and more importantly is the offset calculation. Now you may ask कि सर क्या ये second order में भी होगा, और उससे पहले सर क्या ये disturbance transfer function में भी होगा? Let's do that. तो loop is same, there is nothing is changing here. Now let's talk about, ये सब कुछ ऐसा ही है. Simplification के लिए मैंने GM और GF को 1 लिया है, ठीक है? So नोट नहीं किया होगा तो पॉज कर लो, बैक जाओ, नोट कर लो, ठीक है? सो सिंप्लीफिकेशन के लिए चीजें 1 ली है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेटरी ट्रांसफर फंक्शन. यू कैन सी हियर, प्रैक्टिस कर लो कि एक सिंपल फीडबैक लूप में जो ट्रांसफर फंक्शन है वो डायरेक्ट कैसे लिखना है ना, विदाउट डूइंग ऑल दोज कैलकुलेशंस, है ना, विदाउट डूइंग द बेसिक्स, गोइंग थ्रू द बेसिक मेथड. जस्ट ट्राई टू राइट द ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली. दीज आर सिंपल फीडबैक लूप्स. यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना ना. So हाँ, but if you are having any kind of confusion, okay सर कि नहीं लग रहा है कि लूप सिंपल नहीं है, आई थिंक शायद आंसर गलत आएगा, कोई बात नहीं, फिर बेसिक मेथड से डिराइव कर लो. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द रेगुलेटरी ट्रांसफर फंक्शन. दिस इज आवर केस 1. ओके, whatever we have discussed about controllers is going to prove here. Regulatory closed loop transfer function, what is that? Y bar s divided by d bar s. Y bar s divided by d bar s, and that has to be GD. GD. Now what is GD? We'll talk about that. GD
divided by, I think the denominator was same. That is why one question, you should not ask one question ki sir, the P controller was not changing the order in case of servo problem. Is it so in the case of regulatory problem? Yes, because in servo and regulatory the denominator is not changing. तो वहां भी order same रहेगा, यहाँ भी उतना ही रहेगा, है ना. 1 plus open loop transfer function, so that is Kc Kp tau p is plus 1, right? Kc Kp tau p is plus 1, ठीक है ना. Gd divided by, okay, fine. Now let me tell you one thing here, one point that you must remember. कई बार क्या होता है, many times, suppose if GD is provided in the question, then it is fine. If GD is provided in question, then it is fine. Provided in the question, then use that value for the transfer function. Otherwise, GD is taken to be same as GP. ऐसा गेट में नहीं होगा, but still for your questions, for your satisfaction, आपके लिए बस आप ये ध्यान रखना, GD should not be taken as by default 1 नहीं लेना है. GD should be taken same as GP, right? GD should be taken same as GP. This one, KP by tau p is plus 1, right? So this is only a rule, a thumb rule. If not provided in the question, GD को 1 नहीं लेना है. आप देखोगे गेट में ऐसी सिचुएशन नहीं आती, GD will be there. Okay, so GD is equal to GP. This is the thumb rule that you must remember. Okay, so let's write this transfer function as ys y bar s by d bar s. This becomes GD is equal to Kp by tau p is plus 1 divided by 1 plus Kc Kp by tau p is plus 1. Of course, the numerator will be cancelled and I'll be having the same, almost similar kind of result. Tau p s plus 1 plus Kc Kp. आपको फिर से इसे फर्स्ट ऑर्डर बनाना है. You can do some rearrangement and you'll find yourself that y bar s by d bar s is equal to Kp by 1 plus Kc Kp. Kp by 1 plus Kc Kp divided by, in that case, okay, then divided by 1 plus Kc Kp and tau p divided by 1 plus Kc Kp multiplied by s plus 1. Again, you can see that in the presence of the controller, what is the order? The order is still 1. पूरा denominator is same है. Denominator में कोई change आया? नहीं आया. Denominator is same whether you are writing the transfer function for regulatory problem or for servo problem. Denominator में कोई change नहीं आएगा. What about offset? बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं. You can write from here about gain and tau. Of course, the tau has decreased. What about offset? Let unit step change in disturbance. आप देखोगे यहां भी offset आएगा. Let unit step change in disturbance. ये सारे अपने आप में क्वेश्चंस ही है ना. I'm just not taking values, but there are like of questions only. Let unit step change in disturbance. ठीक है. So it is going to become, offset will be, see, one more thing. When you are changing the disturbance, the set point has not changed, and the formula of set point, formula of offset is set point minus measured value. मैंने disturbance को बदला और set point में कोई change किया ही नहीं, so that has to be 0 minus yt at t tending to infinity, that is s into ys. What is ys? Ys is xs. What is xs? Xs is the Laplace of disturbance, so 1 by s into regulatory transfer function, which was this kp. यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप फंक्शन कौन सा यूज करो, वेदर यू आर यूजिंग servo transfer function or regulatory, that becomes very important. And you can see yourself that it is minus kp. तो offset अगर minus में आ रहा तो minus में रहने दो, by 1 plus kc kp. And again, as kc increases, offset is going to decrease. ये सब वैल्यूज नहीं रख, डोंट ट्राई टू लर्न दीज फॉर्मूलाज. ये तो आप कभी भी डिराइव कर सकते हो ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. यू कैन ऑलवेज डिराइव दिस थिंग्स, है ना. इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम हियर. ओके, दिस वाज एन एग्जांपल वेयर आई टुक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड पी कंट्रोलर. सारी एनालिसिस करके देख ली, ऑफसेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑर्डर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा.
पी कंट्रोलर नेवर चेंजेस द ओवरऑल ऑर्डर, मतलब कि जो पहले था, सपोज अगर पहले फिफ्थ ऑर्डर था तो फिफ्थ ही रहेगा. आई एम नॉट सेइंग जस्ट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर, एंड नाउ आई कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर. वी विल डू दैट. विल टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर. सेकंड के बाद इसको प्रूव करना, इसको मैथमेटिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दोज एग्जांपल्स, बट yes, second order examples definitely I can take. And you're going to see an interesting thing here. Okay, so this is the first order system. Okay, fine. So let's take the second case now. इसको तो सेम रहने देते हैं ना. Why to make diagrams repeatedly? This is Y SP bar. P controller controlling a second order system. P controller controlling a second order system. Let us erase and we'll keep rest everything same as before. P controllers controlling a second order system. Okay, so what is the transfer function for a second order system? I hope जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा पीडीसी याद होना चाहिए, बाकी सबको याद ही रहता है. Kp by, I'm writing like this, tau p square s square, this is tau p square s square, 2 zeta tau ps plus 1. Right, that was the expression. Let's do one thing. Let's write the servo closed loop transfer function. Servo लिख के देखो, पहले लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, and also check whether it is changing the order or not. आप ऑफसेट निकालना चाहते हैं वो भी निकाल के देख लीजिए, हालांकि ऑफसेट आएगा कि नहीं आएगा. वी कैन डू दैट. ओके, सो सर्वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मींस y बार बाय ysp बार. s व्हाट विल बी दैट? मैं s बार बार नहीं लिखूंगा, इग्नोर करेंगे इसको, ठीक है, निग्लेक्ट करेंगे. इग्नोर इज अ डिफरेंट वर्ड. क्या करना था हमें? वी आर राइटिंग सर्वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. सो gf is equal to 1, gm is equal to 1, kc kp divided by tau p square s square plus twice. देखो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी. डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. यू मे ऑल्सो आस्क वन थिंग कि सर आपने फर्स्ट ऑर्डर में भी लिखवाया, यहां पे भी लिखवा रहे हो, एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट दिस न्यूमरेटर एंड दिस थिंग आफ्टर 1 दे आर सेम. पर आप कह रहे हो कि सर ये तो फॉरवर्ड पाथ फंक्शन है ना, दिस इज फॉरवर्ड पाथ. वाइल इसको क्या नाम दिया था हमने? दिस इनसाइड द ब्रैकेट दिस वाज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. Is it true that forward path is equal to open loop transfer function? No. The forward path consists of only these blocks, while the open loop consists of all these 4 blocks, right? It should be very clear. So forward path and open loop will be same. क्या difference होगा? बस इसका. But if gm is equal to 1, then they are same. So we are getting same transfer functions in the numerator as well as here in the open loop transfer function only because gm is equal to 1. If gm is not equal to 1, then definitely forward path and open loop transfer function will be different. अब क्या करेंगे? इसका LCM लेते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है. y bar by ysp bar, y bar by ysp bar is equal to kc kp. LCM लेंगे, denominator will be cancelled and you have this kc kp divided by tau p square s square plus 2 zeta tau ps plus 1 plus kc kp. You can see that what is the order, overall order? Second, but it is not present in the standard form. अभी आपको पता लग गया that the overall order of the closed loop transfer function is second. Okay, but of course we can do some rearrangements. Y bar by ysp bar is equal to kc kp. क्या करना है? पूरी इक्वेशन को 1 plus kc kp से डिवाइड करना so that I can have plus 1 here. So kc kp divided by 1 plus kc kp. Now this will become tau p square divided by 1 plus kc kp
multiplied by s square plus twice of zeta tau p divided by 1 plus kc kp multiplied by s plus 1 बन गया इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं. पता तो लग गया कि स्टिल द पी कंट्रोलर इज मेंटेनिंग द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, राइट. तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, ओवरऑल ऑर्डर मेंटेन हुआ नहीं हुआ. यू नो दैट एज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस द रिस्पॉन्स बिकम्स स्लगिश. सो अगर कंट्रोलर लगाने के बाद ओवरऑल सिस्टम का ऑर्डर बढ़ जा रहा है तो रिस्पॉन्स स्लगिश हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो y by ysp, y by ysps, ys by ysps, you can do some more rearrangements as kc kp by 1 plus kc kp and then इसको देखो कैसे लिखेंगे, tau p by स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के सी के पी होल स्क्वायर, है ना. tau p by स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के सी के पी होल स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं. एंड देन एस स्क्वायर. सिमिलरली हियर इन द सेकेंड टर्म जीटा के नीचे एक रूट ऑफ 1 प्लस के सी के पी एंड 1 बिलो tau p, बिकॉज tau p को मुझे सेम रखना है ना. आई कांट हैव tau p इफेक्टिव tau p हियर इफेक्टिव tau p इज डिफरेंट एंड हियर इफेक्टिव tau p इज डिफरेंट, ऐसा नहीं कर सकते ना. आई हैव टू कीप सेम tau p. So twice of zeta divided by root of 1 plus kc kp, fine, into tau p divided by root of 1 plus kc kp, take, and multiplied by s plus 1. What you can see here, this is the second order system. Again, things verified that the second order system remains second order even after the feedback loop is closed. या ऐसा भी कह सकते हो कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाने के बाद जो ऑर्डर है वो भी सेम है. बट व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, you can easily observe that the tau p dash or a tau p effective is tau p divided by root of 1 plus kc kp, means the response of the closed loop, the tau p will be less, right. Now what is the meaning of less tau p for second order system? Don't say that less tau p means a fast response. Of course, if it is over damped, in that case less tau p means fast response, but it can be under damped as well. What about zeta dash? Zeta dash is equal to zeta divided by, this is a very important conclusion, 1 plus kc kp. It means when you apply the proportional controller, the zeta, the damping coefficient of the system is affected. पहले तो ये समझना है कि proportional controller लगाने के बाद zeta affect होता है. और कैसे होता है? You can see here that zeta dash is less than zeta, right? This is very, very important to understand. When you control a second order, suppose second order system is underdamped. Suppose if the second order system is underdamped, then zeta of the underdamped system, now after applying P control action, zeta of the underdamped system is going to decrease. And what is the meaning of less zeta? Less zeta means the response will become more oscillatory, right? So agar aap KC suppose if the process was originally overdamped, after applying the value of after applying P controller, zeta will decrease, so it will become fast, है ना. It can also become critically damped. As you can see that as you increase the Kc, the overdamped system can also become underdamped. तो Kc P controller लगाने के बाद, depending upon the value of Kc, the magnitude of the nature of response, in fact we can say that the nature of response may change. मतलब हो सकता है कि प्रोसेस ओवरडैम्प्ड हो, आपने P कंट्रोलर लगाया और Kc की वैल्यू इतनी ज्यादा कर दी कि प्रोसेस क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया. हो सकता है प्रोसेस ओवरडैम्प्ड हो, आपने P कंट्रोलर लगाया, you increase the value of Kc by so much magnitude that the zeta become less than 1 and the response became oscillatory, right? But the response, the system order remains second order. एक चीज ध्यान रखनी है that after applying P action, अच्छा if you want you can also calculate the offset. मैं आपको यहाँ पे मन से ऐसी उंगली पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ. Suppose this is a servo problem and unit step change in set point, so 1 minus s into 1 by s into this, है ना. s tending to 0, s and 1 by s, s cancelled, this is 0, this is 0, 1 minus kc kp by 1 plus kc kp निकल गया offset, है ना. तो offset calculation बहुत आसान है. The thing is you write the correct transfer function and you calculate the you use the correct transfer function
आई मीन जब आपका डिस्टर्बेंस में चेंज हो तो रेगुलेटरी ट्रांसफर फंक्शन यूज करो, जब सेट पॉइंट में चेंज है तो सर्वो ट्रांसफर फंक्शन यूज करो. फाइन. थर्ड एग्जांपल आई विल टेक फॉर अ पीआई कंट्रोलर. तो पी कंट्रोलर में आई टुक अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम. It was easy to explain, it was easy to rearrange the first order system in the form of the closed loop transfer function. So when P controller was controlling a first order system, the overall order of the closed loop system remains 1. Similarly, when the P controller was controlling the second order system, the overall order of the second order system remains 2. Actually, order बढ़ जाने से होगा क्या? If the order is increasing after using the controller, in that case the response will become slow. फाइन. सो पी कंट्रोलर रिस्पॉन्स को स्लो नहीं कर रहा, और दोनों में आपने देखा द पी कंट्रोलर इज चेंजिंग द इफेक्टिव इज मेकिंग द टाउ different when we have closed loop, and similarly in the second order system P controller is making the tau different as well as zeta difference. So P controller आने के बाद जो पहले का टाउ था वो बदल जाएगा, सिमिलरली जो पहले का जीटा था वो भी चेंज हो जाएगा, एंड वी सॉ दैट टाउ न्यू was less than the tau old, and similarly zeta new was less than the zeta old. So addition of P controller to a second order underdamped system is going to increase the oscillations. Addition of P controller to a second order overdamped system is going to decrease zeta, so its speed will increase. It may become critically damped, या ये भी हो सकता है कि आपने overdamped system पे KC लगाया, P controller लगाया, अब वो underdamped हो जाए. राइट. सो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज पीआई कंट्रोलर. मैंने दोनों केस में आपको ऑफसेट भी निकाल के बता दिया, एंड यू सॉ दैट इन बोथ द केसेस, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर विद पी कंट्रोलर, देयर वाज एन ऑफसेट. सो व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड इन थ्योरी हैज बीन प्रूव्ड मैथमेटिकली. सो पीआई कंट्रोलर कंट्रोलिंग अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस. ठीक है. अब यहां पे मैं सेकंड ऑर्डर नहीं लूंगा. व्हाई? फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस. Very simple reason. You know that in theory we have discussed that the PI controller, due to I action present, due to the presence of the S in the denominator of the PI controller transfer function, the overall order increases. So if I take a second order system, after employing the PI controller, it will become a third order system. Now the analysis of third order is different, and we are not doing the analysis of ऑर्डर्स मोर देन 2, सो उसको नहीं लेते हैं. दैट इज वाई इसमें मैं केवल एक ही सिंपल एग्जांपल लूंगा, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. सो वी हैव दिस नेगेटिव फीडबैक ओनली, आर दिस इज अ पीआई कंट्रोलर, सो वी शुड हैव द ट्रांसफर फंक्शन केसी इंटू 1 प्लस 1 बाय टाउ आई एस. करेक्ट. दैट इज द जीसी. अभी से देख लेते हैं दैट लेट्स टेक जीएफ इज इक्वल टू 1. Again you have a simple feedback control system, and you have the process having transfer function kp by tau ps plus 1. Then you may also have the disturbance. कई बार आपको ब्लॉक डायग्राम ऐसे मिलेंगे जिसमें डिस्टर्बेंस है ही नहीं, तो आपको परेशान नहीं होना उसके लिए, है ना. दिस इज द डिस्टर्बेंस व्हिच इज जीडी. आई टोल्ड यू वन रूल yesterday for disturbance in the previous lecture actually, that what we can take the value of GD if it is not given in the problem, right? So this is d bar s y, okay, and then we have the measuring element, and we again have unity feedback system, so GM is equal to 1. ठीक है. So PI controller controlling a first order process. Now I suggest all of you to write the closed loop transfer function for servo mechanism without doing all these A, B, C, D. कुछ balance नहीं करना है, कुछ reduction नहीं करना है block diagram, but directly transfer function. So we know that this is a simple feedback control loop, so I can use the relation that y bar s is equal to divided by rs c by r or y by ysp. आपको जो notation use करना है आप कर सकते हो, doesn't matter, is equal to multiplication of forward path, that is kc kp by tau ps plus 1, and what is this? This is tau I s plus 1, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, है ना, and then divided by tau is. This is the scenario. Okay, that divided by 1 plus
open loop transfer function which is the multiplication of all these terms, but this is equal to 1, so कोई फर्क नहीं पड़ेगा, it will remain same, that is Kc Kp by tau Ps plus 1. Now you can clearly see, यहीं पे आपको पता लग जाएगा, you can see that the denominator is having a power of s square and you'll see yourself that okay, right, this is the scenario. अभी rearrange करेंगे, don't worry. So when you rearrange this, things will get cancelled in the denominator, this denominator and this denominator. I have the result as y bar s by r bar s. एक्चुअली y के साथ ysp और c के साथ r लिखने का नोटेशन है, बट मैं उसको अभी यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा. ओके, सो वी आर जस्ट डूइंग द क्लोज लूप एनालिसिस. मतलब जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं कंट्रोलर्स के बारे में, वी आर जस्ट प्रूविंग देम मैथमेटिकली. वट एवर वी कैन प्रूव, वी आर प्रूविंग देम मैथमेटिकली दैट आई एक्शन में कोई ऑफसेट नहीं होगा. ठीक है. ओके, सो 1 प्लस के सी के पी टाउ एस प्लस 1 टाउ आई एस, दिस इज द सीन. ओके, फिर चलिए कैंसिल होगा और वाई एस बाई आर बार एस इज के सी के पी मल्टीप्लाइड बाय टाउ आई एस प्लस 1. फाइन, के सी के पी बाय टाउ आई मल्टीप्लाइड बाय टाउ आई एस प्लस 1 एंड दिस बिकम्स tau p s plus 1 multiplied by tau I s, ठीक है, ओके, प्लस के सी के पी. देखो आप देखते जाओ, जैसे ही मैंने पीआई कंट्रोलर के साथ, इवन इफ आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, द कैलकुलेशंस हैव स्टार्टेड बिकमिंग कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू बिफोर, like when I took p action and first and second order system. So plus kc kp into tau I s plus 1, kc kp into tau I s plus 1, ये ठीक है. I think this is correct. kc kp tau s plus 1 tau p s plus 1 tau I s, okay, ठीक है. Obviously you can see here, if you multiply the denominator, obviously you will find that this is a second order system. So what you are observing, that initially the process was first order, sorry, this is the process, it was first order. कंट्रोलर लगाने के बाद जो पूरा सिस्टम बना, नाउ दिस इज ऑफ सेकंड ऑर्डर. देखो ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको प्रोसेस ही देखना है. सपोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सपोज द प्रेशर इज दिस प्रोसेस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, द वॉल्व इज ऑफ सेकंड ऑर्डर. सो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोलर? थर्ड ऑर्डर सिस्टम. If it is third order, then after employing this PI action, the overall closed loop transfer function will become of fourth order. So PI कंट्रोलर लगाने के बाद पहले से जो भी ऑर्डर था वो +1 हो जाएगा. Why +1? Because of this tau is. Okay, so PI controller increases the overall order of the closed loop system before employing the controller, and when you are employing the controller and closing the loop, then this is how the order changes. Okay, तो ये पूरा मैथमेटिकल है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोसेस कंट्रोल का जो पार्ट है मैथमेटिकल है, इसमें मैं ज्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं, ये मैथमेटिकल है, आपको दिख रहा है सामने. ठीक है, जो समझाना था वो हमने डायनेमिक्स में एंड कंट्रोलर के डायनेमिक्स में समझ लिया. ठीक है, लेट अस रीअरेंज दिस. y बार एस डिवाइडेड बाय r बार एस इज इक्वल टू के सी के पी टाउ आई एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय, लेट अस मल्टीप्लाई दीज थिंग्स. एक बार देख लेते हैं कि बनता क्या है. टाउ पी टाउ आई एस स्क्वायर प्लस टाउ आई एस, सो दैट इज टाउ आई एस, और यहां से बन जाएगा के सी के पी टाउ आई एस. सो आई कैन से दैट टाउ आई इंटू 1 प्लस के सी के पी इंटू एस. ठीक है, ये टाउ आई एस प्लस टाउ आई के सी के पी एस प्लस के सी के पी, और कुछ नहीं है, प्लस के सी के पी. ठीक है, यू कैन सी दैट दिस इज अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम. इसको थोड़ा सा और टू मेक इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय के सी के पी, देन द न्यूमरेटर बिकम्स, ये चीजें पूछी जा सकती है ना. यू शुड नो हाउ टू डिराइव दिस. लर्न नहीं करना है, बट यू शुड बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि अगर ये आएगा यू विल इजिली डिराइव. ये चीजें पूछी जा सकती है. दैट व्हेन अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज कंट्रोल्ड विद द पीआई कंट्रोलर इन अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम एंड अज्यूमिंग दैट the valve is having very fast dynamics, then in the servo mechanism the transfer function will be formed is having a value of zeta equal to this. बहुत सिंपल से क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं यार, क्वेश्चंस है ना. यही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं से क्वेश्चंस अलग अलग निकाले जाते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यार ये सब डेरिवेशंस तो आती नहीं है. ठीक है, डेरिवेशंस नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेरिवेशंस, बट डेरिवेशंस करने से चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एंड यू विल बी एबल टू थिंक ऑन सम न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आप सोच पाओगे. हमारा पर्पस ये है कि आप सोच पाओ ऑन अ न्यू क्वेश्चन.
आई एम नॉट सेइंग दे आर गोइंग टू आस्क दिस डेरिवेशन, दे आर गोइंग टू आस्क यू कि चलो ये डिराइव करो क्या रिजल्ट आएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन डेरिवेशन से आपकी थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग पावर बढ़ती है, एंड छोटी छोटी डाउट्स जो बीच बीच में आते रहते हैं आपको, अगर आप डिराइव ना करो, इफ यू अज्यूम कि अच्छा ठीक है कर लेंगे, एंड देन व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग द प्रॉब्लम्स इन द एग्जाम, फिर आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो। ये मैंने खुद फील किया है ना। व्हेन आई प्रिपेयर्ड वंस सुपरफिशियली, माय प्रिपरेशन वाज सुपरफिशियल। बुक लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उसके सॉल्यूशन देखे, पता नहीं गलत थे सही थे, उस समय मुझे इतना सोचने की फुर्सत भी नहीं थी, है ना। बुक उठाई, सॉल्यूशन देखे कि अच्छा ये ऐसे ऐसे मैं ऐसे कर लूंगा, ये ऐसे ऐसे मैं वैसे कर लूंगा, और पेपर में जब गया तो बीच बीच में छोटी छोटी चीजें, यार ये वाई किया तो था ऐसे, पर ये वाई था क्या, वही भूल गया, है ना। बिकॉज आई नेवर प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस करोगे, डिराइव करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तभी पता लगेगा ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप बस रीड कर रहे हो, रीड करने से काम नहीं बनेगा। पेपर में आपको रीड नहीं करना है, यू हैव टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। इवन व्हेन यू आर, मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर जब एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं गेट के, तो दोबारा उन्हीं क्वेश्चंस को करने का क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। एक तो आप थोड़ा सा टाइम देके करो, टेक 1 month टाइम। वंस यू हैव सॉल्व द गेट प्रॉब्लम्स, मेनी स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम, एंटायर प्रॉब्लम एट वंस, या कई ऐसे कहते हैं कि ठीक है लेट्स सॉल्व द प्रोसेस कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स ऑफ गेट। आपने कर लिया, लीव इट, ओके। Of course, you are having some doubts. Of course, you are not able to solve some problems. But after 1 month, again try to solve the same problems. अब जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो एक तो ये है कि आप उसके सॉल्यूशन देखो मत कि अच्छा ये ऐसे किया था। जस्ट ट्रीट इट एज कि ये क्वेश्चन फिर से आपके सामने आया है, फिर से उसको सॉल्व करेंगे। बच्चे कई बार कहते हैं सर ऑप्शन ही याद हो जाते हैं, मैंने इतना सॉल्व कर लिया है। एक तो देखो, अगर इतनी बार सॉल्व कर लिया, आई मीन इफ यू हैव सॉल्व 6-7 टाइम्स द गेट प्रॉब्लम्स, सफिशिएंट रहेंगे उतना कर लेना। तो फिर भी अगर आपको ऑप्शंस याद भी है कि हाँ इसका ये आंसर आ जाए, तो उसको डिराइव करके सॉल्व करके देखने में क्या जा रहा है आपका। सॉल्व दी प्रॉब्लम। आपको पता है कि 70 आंसर आने वाला है, सपोज सॉल्व करो। सॉल्व करने से होगा क्या कि उसका जो कॉन्सेप्ट है जिससे वो सॉल्व हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। आपको आंसर थोड़ी रटना है, आपको तो कॉन्सेप्ट रटने हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह से अप्रोच की जाती है। हाँ, यू कैन ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, वेरियस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। होता क्या है कि व्हेन यू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स, यू आर गोइंग टू डेवलप। भाई सीधी सी बात है, आप सर्जन को देखो, किसी सर्जन को, अभी ये कोरोना के सारे सिस्टम चल रहा है, देखो इनिशियली इवन डॉक्टर्स को नहीं पता था कि करना क्या है। वाई? कभी प्रैक्टिस नहीं, कभी सामने चीजें नहीं आई, राइट। अब जब बहुत सारे पेशेंट्स आ गए, नाउ दे हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर डूइंग, इवन दे डोंट नो व्हाट टू डू, है ना। इट्स अ न्यू काइंड ऑफ थिंग, बट दे हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आज की डेट में अभी देखो तो उनको भी बहुत सारी चीजें पता है, इवन पेशेंट्स को भी बहुत सारी चीजें पता है कि अच्छा मुझे ये करना है। बिकॉज नाउ देयर माइंड्स आर प्रोग्राम्ड, देयर माइंड्स आर ट्रेन्ड, देयर माइंड्स आर हैविंग सम डोमेन कि हाँ अगर मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो इस वे को मैं सबको इसको ट्राई करूंगा, इसको ट्राई करूंगा, इसको ट्राई करूंगा। सो सेम वे इफ यू हैव सॉल्व, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग नए क्वेश्चंस के लिए तो तड़पते रहते हो कि ठीक है मुझे नए क्वेश्चंस चाहिए, मिले दिए थोड़े नए क्वेश्चंस, पर फिर से उनको दोबारा करने के बजाय फिर से सर और नए क्वेश्चंस चाहिए। तो होता क्या है कि गेट एग्जाम का पैटर्न ऐसा नहीं है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस 500 क्वेश्चंस। अगर आप गेट के क्वेश्चंस देखो इन बिग सब्जेक्ट्स लाइक मास ट्रांसफर, सीआरई, हीट ट्रांसफर, एवरी ईयर यू हैव 7-8 क्वेश्चंस, एवरेज 7-8 क्वेश्चंस। इन पास्ट 30 years you will be having approximately 250 questions। 30 years के पेपर की बात लेके चलते हैं, 250 questions in CRE, 250 questions in mass, 250 questions in heat, ठीक है। 750, this makes 750। then there are some subjects जिसमें से थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, like fluid, like thermo, classical thermo, fluid, thermo, और कौन सा बच गया, PDC। from these subjects suppose you have average 5 questions, so 150 questions from here, so 150, 150, 300, 450 questions, 450 questions here, and 750 आपको पहले बताए थे, 800 and 400, 1200, 750 थे, yes, 1200 questions in the major subjects। Apart from that, from the other subjects, you are having at least, I mean all the other remaining subjects, eco, CT, you are having at least 10 to 15 questions from all these subjects। So you are having, I guess, मैंने कभी काउंट नहीं किया, अभी आपके सामने कैलकुलेशंस कर रहा हूं, मुझे लगता है अगर आप पिछले 30 years के क्वेश्चन देखो, there are approximately 1800 questions। I guess कि 30 साल में आपको कम से कम 1800 गेट के क्वेश्चंस मिलेंगे। Now ask yourself, how many out of these 1800 questions you have solved and how many times?
और जब तक आपने उनको सॉल्व नहीं किया, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू इवन फॉर टेस्ट सीरीज, व्हाई? भाई सबसे पहले तो वो है ना, आउट ऑफ 1800 एटलीस्ट आपने 1500 भी किए क्या? नहीं किए होगे, है ना? तो पहले ये, और वंस यू सॉल्व देम, आई एम नॉट सेइंग टू सॉल्व 1800 ऑल एट वंस, बट जैसे मान लो सपोज आपने प्रोसेस कैलकुलेशन के क्वेश्चन किए, सीआरई के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, नाउ इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, right now you have done 3-4 subjects, it has been quite a long time, you have not touched PC, you have not touched CRE, again start solving their previous year problems. Preparation, revision, I mean learning new subjects and revision should go parallel. Don't wait for someone, वो आएगा आपको बताएगा कि अरे अरे सुनो सुनो तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, अब रिविजन चालू कर दो चालू कर दो। कोई ऐसे दौड़ दौड़ के आपको बताने वाला नहीं है। दिस इज यू हु नोज कि ठीक है, नाउ इट हैज बीन सम टाइम, 1 month 2 months, I have not touched even a single problem. मैं तो हमेशा कहता हूं, देखो हमारे माइंड को ट्रेन करना है टू अटेम्प्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन दैट ड्यूरेशन 3 years. क्या 3 years में यू आर गोइंग टू गेट ओनली सीआरई प्रॉब्लम्स? 3 years में यू आर गोइंग टू गेट ओनली थर्मो प्रॉब्लम्स? नो, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू स्विच फ्रॉम वन काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज टोटली डिफरेंट in a different scenario, different difficulty level to another type of question. According to me, what is the best way of this? You take daily some random kind of problems. Pick random problems. Pick random problems. चलो आप सारे सब्जेक्ट के नहीं तो एक सब्जेक्ट, जैसे सपोज आपके जो सब्जेक्ट्स आपने रिवाइज कर लिए, जो सब्जेक्ट आपने खत्म कर लिया अभी तक, उसकी 5-5 प्रॉब्लम्स तो लेके करो डेली। हाँ, आपका उसमें होगा क्या ना, देखो होता क्या है, हमें आती हैं चीजें, वी नो द थिंग्स, वी नो द कॉन्सेप्ट, even we remember them, but we don't have confidence that we remember them, है ना? We don't have confidence and that is the problem. और वो confidence कैसे आएगा? Who is going to tell you कि नहीं भाई तुझे याद है तो चिंता मत कर? ऐसे कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। Even you can't tell yourself कि नहीं तुझे याद है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें याद है। तो पता कैसे लगेगा? When you are daily testing yourself, when you are daily testing कि हाँ 4 प्रॉब्लम ली, you have done mass transfer suppose, ठीक है? अब इसमें ये प्रॉब्लम लेके मत बैठ जाना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, बताओ बताओ। वो बताएंगे, उसको करेंगे, वो एक अलग मैटर है, ठीक है? एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो पिछले 4 सालों में, 4 सालों से मैं जो है फुल टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उससे पहले 1 साल मैंने कुछ ऐसा समझ लो कि बस टाइम पास किसी तरह पढ़ा है। पिछले 4 सालों में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके डाउट ही रह गए, और वो लड़के अभी पीएसयू में, कोई बार्क में, कोई ओएनजीसी में, कोई कहीं अपना मजे से जी रहा है। तो कुछ डाउट्स तो हमेशा जीवन में रहने वाले हैं। अब उन डाउट्स के पीछे भागोगे, या जो आपको 97-98% चीजें आती हैं उनके पीछे भागोगे, देर आर सम फ्यू गेट प्रॉब्लम्स जिनके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। इवन आई डोंट नो दैट वेदर दे आर कंप्लीट और नॉट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल कॉन्सेप्ट्स, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल लिटरेचर। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे मान लो, ठीक है, इट इज गुड टू बी क्यूरियस, इट इज गुड टू बी क्यूरियस, इट इज गुड टू ट्राई दैट प्रॉब्लम एवरी टाइम कि चलो अब इसको फिर से करके देखते। इट इज गुड, दैट इज अ गुड हैबिट, है ना? वो आपके अंदर का जो वो क्यूरियस नेचर है आपका, वो बहुत अच्छी चीज है। बट दिस शुड नॉट अफेक्ट योर प्रिपरेशन ऑफ द रिमेनिंग कोर्स। ऐसा नहीं है कई बच्चे की, नहीं सर ये असाइनमेंट का एक प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं तो अभी आगे बढ़ूंगा ही नहीं, फिर पड़े रहो वहीं पर, है ना? दिस वाज द सिनेरियो व्हेन आई वाज, मैं कई बार बता चुका हूँ शायद कि मैं झेल चुका हूँ सारी चीजें यार। जेई में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेके बैठा रहता था। मैंने बंसल की शीट बना दी, और मैं खुद एलन में था, रेजोनेंस की शीट बना दी, बंसल की बना दी। मुझे बस क्वेश्चन चाहिए था, मैं क्वेश्चन का भूखा था। मुझे मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। स्टिल आई हैव दोज नोट्स ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ता, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट उस इंटरेस्ट का क्या करूं? अल्टीमेटली माई प्रिपरेशन वॉज अफेक्टेड। आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स। नहीं मिले मार्क्स, नहीं आए रैंक, क्या कर लिया मैंने? इट्स गुड टू बी क्यूरियस। आपका इंटरेस्ट एक अलग चीज है, यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो आप बाद में दिखाना। जब आपको लगे कि आई वांट टू गो इनटू एकेडमिक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो इंटरेस्ट आप पढ़ाना चालू कर दो उस सब्जेक्ट को लेटर। बट पहले रैंक तो ले आओ भाई, है ना? और रैंक लाने के लिए इंटरेस्ट एक अलग चीज है। साइड में सपोज यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सर ये आज तक किसी ने मुझे बताया नहीं, सॉल्व नहीं, करते रहो उसको। बट keep your preparations, keep doing your preparation, keep continuing your preparations. Daily take five problems from all the previous completed subject. 5 problems of GATE कर रखी हैं तो भी करो। It will help you to gain confidence कि हाँ याद, एक्चुअली होता यही है। आप सब कर लोगे, आपको सब आता है। Everything is possible. If I can do, you can do. It is very simple. If I can do it, you can do it. लेकिन
आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। एंड वो कॉन्फिडेंस क्यों गायब होता है? बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू टेल यू। आपके अंदर कोई अलार्म लगा है? इज देयर अ बटन इनसाइड यू, अ बल्ब इनसाइड यू, जो जैसे ही आपको चीजें याद हो जाएंगी वो ग्रीन हो जाएगा और भूल जाओगे तो रेड हो जाएगा? देयर आर नो इंडिकेटर्स। अगर ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। आपको पता, अरे सर ये देखो रेड बल्ब जल रहा है, मतलब मैं भूल गया, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। देखो सर ग्रीन बल्ब जल गया, याद हो गया। ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू फील योर सेल्फ कि हाँ आई नो द थिंग्स, एंड द बेस्ट वे ऑफ फीलिंग दैट टू प्रैक्टिस टू राइट एवरी टाइम, राइट डाउन। एक ही चीज को लिखो यार, एक ही चीज को लिखो बार बार। अल्टीमेटली आप गलती क्या करके आओगे कि सर 2 CSTR सीरीज में लगा दिए थे, मैंने कन्वर्जन गलत निकाल ली। अल्टीमेटली होगा ये कि हाँ सर आप सही कह रहे थे, मैं फालतू में इधर पढ़ा था, गलती तो यहीं करके आया हूं, है ना। तो बस वही है कि जो आपके पास है उसको समेट के रखो, उसको मत जाने दो। लॉस वही होगा। जो नहीं है अभी, बहुत छोटी छोटी चीजें भी बहुत सारी नहीं है, जो नहीं है अभी उसके पीछे मत भागो। अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करो। यू आर प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कल को यूट्यूब पे कोई आ गया, नया चेहरा आ गया, आपको चेहरा सुंदर लग गया, कई बार होता है बच्चों के साथ, नहीं ये होता है, एक फीलिंग डेवलप हो जाती है कि यार मजा आ रहा है सर के साथ, मजा आ सकता हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है, बट वो आपकी प्रिपरेशन के लिए ठीक नहीं है ना। आप एक फ्लो में प्रिपरेशन कर रहे हो, सडनली समवन स्टार्टेड कि नहीं नहीं देखो देखो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप वहां चले गए, तो आपको जो जहां खींचता है आप उस साइड डेविएट हो जाते हो। अपनी प्रिपरेशन का आपका तरीका है। He or she is not going to attend your paper, आप खुद करोगे। इट्स यू आर गोइंग टू अटेंड योर पेपर, आपकी प्रिपरेशन आपके हिसाब से चलेगी भाई, किसी और के हिसाब से थोड़ी। एंड इफ यू आर स्टडिंग विद मी, आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, देन जस्ट हैव ट्रस्ट कि हाँ सर ठीक है, इस तरह से चलेंगी चीजें। आप बीच में देखिए जो पढ़ना है अपने देखो, अपने फ्लो को मत बिगड़ने दो। बीच में किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसको आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो, उसको थोड़ा सा और जानना चाह रहे हो, इट्स ओके, ठीक है, बट पता होना चाहिए, यू शुड नो कि व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली। ये छोटी छोटी चीजें आपकी प्रिपरेशन को खराब करती हैं, है ना। आप टेक्निकल पढ़ रहे हो, आपने बीच में एप्टीट्यूड के लेक्चर्स देख लिए, कहीं पे कोई मतलब महारथी आ गए कि नहीं नहीं अब मैं ही एप्टीट्यूड करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा कि कुछ हो जाएगा। भाई मेरी बात एक सीधी समझ लो, एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है, ठीक है। देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 15 मार्क्स, ठीक है, उसमें 2-3 मार्क्स की इंग्लिश कभी ऐसी पूछ लेता है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, सपोज फ्रॉम, और ये कंफर्ट पिछले कई सालों में डेवलप होगा, इसको अभी आप डेवलप नहीं कर सकते, दिस इज ट्रुथ। इफ यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद इंग्लिश, इज देयर एनी मीनिंग ऑफ लर्निंग 2000-3000 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स? कोई मतलब है उसका? आर यू अपीयरिंग फॉर कैट? आर यू अपीयरिंग फॉर बैंक पीओ एग्जाम that you will be having at least 50 questions on antonym synonym? You will be having hardly one problem. You can learn 2000 words and the question may ask you 2000 tooth word. क्या कर लोगे? Are you going to apply some formula? No. It totally depends that do you have any hint of that particular word. अगर हाँ, you may eliminate some option, you may then find the answer. Otherwise you are going to do hit and trial. उसका तो खैर उसकी बात नहीं कर सकते। कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये तुक्का लगाना चाहिए क्या? How would I tell you? कैसे बताऊंगा मैं तुक्का लगाना चाहिए? It totally depends upon your luck. Why should I tell you कि तुक्का लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। Totally depends upon your luck, right? Suppose you have already scored, suppose you have already done attempted 83-84 marks, it is having negative marking, मत लगाओ भाई तुक्का, ठीक है। अगर कोई लॉजिक है उसके पीछे देन ओनली, अगर कोई लॉजिक है तुक्का मत, इंग्लिश में तुक्का क्या लगाओगे, है ना। एंड देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ लर्निंग वर्ड्स। प्लस सपोज यू आर, इट विल टेक, इफ आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश, इवन द बेसिक ग्रामर, इट विल टेक 40-50 आवर्स, राइट। तो टेंस, प्रिपोजिशंस, आर्टिकल्स, ग्रामेटिकल एरर्स, अगर इसको पढ़ने बैठोगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। So what is the best way? I'm not saying that you will not able to solve this grammatical error problem. That you can do, but that is again depends upon how much you have, you are again comfortable with that part of English. Okay. So एक चीज ये मान के चलो कि English में if you are not very much comfortable, so 2 से 3 नंबर आपको छोड़ने हैं. This is reality. छोड़ दो, कोई problem नहीं है. It's not a problem. But yes, I have, according to my experience in aptitude paper, in aptitude part, above 10 marks you should score. If you have not scored above 10, then it is your weak. There are many students के सर 2 नंबर आए थे. It means it is your weakness. You have to work on it, right? छोड़ना कुछ नहीं है, बट सीधी सी बात समझो यार, मतलब जो चीज आप कर ही नहीं पाओगे पेपर में, उस क्यों मेहनत कर रहे हो उसको। इन गेट एग्जाम इट्स नॉट लाइक बैंक पीओ एग्जाम, यू हैव टाइम,
ठीक है, कहीं पे टाइम बचाओगे, कहीं लगा देना. You can even once I was appearing in I think 2019 for that question, which was the most lengthy one problems in the history of GATE exams, I guess in the past 7-8 years. There was that question of CSTR. I think they asked the volume of CSTR and everything, all the concept of CRE was present in that one problem. मतलब चैप्टर 1 ऑफ 11 स्पीड से लेकर चैप्टर 6 तक के जितने कॉन्सेप्ट थे सारे उस प्रॉब्लम में डाल दिए. मैंने उस क्वेश्चन को 12 मिनट लगाए थे एग्जाम में, 12 मिनट्स. एंड यू नो कि आफ्टर अप्लाइंग 12 मिनट्स ईच एंड एवरी स्टेप आई डिड वेरी केयरफुली. इट टुक 12 मिनट्स फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. नन ऑफ माई स्टूडेंट टोल्ड मी कि सर आई गॉट द राइट आंसर. नन ऑफ द स्टूडेंट, आई थिंक किसी का आया ही नहीं राइट आंसर. इतने ज्यादा चांसेस थे वहां पे गलती होने के कि अगर आप 15-20 मिनट भी लगा दो पॉसिबली आप वहां गलती कराओगे. राइट? तो गलतियां देखो, आप गलती कहाँ कर रहे हो? आप गलती बेसिक्स में कर रहे हो, आप कन्वर्जन्स में कर रहे हो, टेम्परेचर यूज करने में कर रहे हो, फॉर्मूले में गलती कर रहे हो. इट्स नॉट लाइक यू आर हैविंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन गेट एंड देन यू आर मेकिंग मिस्टेक. आप तो इसी में मिस्टेक कर दे रहे हो. You are making mistakes in the 95% only, which you know कि हाँ ये तो सर कर ही लेंगे, ये तो कर ही लेंगे, उसी में गलती करके आओगे. You will probably not, क्योंकि वो जो 5% आपको नहीं आता वो तो वैसे ही छोड़ोगे. ठीक है, और जो 95% बच गया वहां आप गलती कराओगे, तो आप कहीं के नहीं रहे. ठीक है, तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि जो मेजर पोर्शन है गेट का, पहले वो जरूरी है उसको तैयार करो. बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं सर वो नया वाला कब पढ़ाओगे, नया वाला कब पढ़ाओगे. क्या पढ़ाऊं उस नए वाले में? कुछ है ही नहीं उसमें यार. कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन है, मैं आपको बताऊंगा. दीज आर द मेथड्स ऑफ कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन. दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन मास्टर्स, सम ऑफ यू मे हैव स्टडीड इन बैचलर्स. हाँ, सिंटरिंग है, फाउलिंग है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन. देन विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक्स. पढ़ लेना. आपको पता है आपके अंदर क्या फीलिंग है कि मैं पहले पूरा करूंगा, पूरा सिलेबस करूंगा, नहीं पहले वो भी करूंगा, उसके बाद मैं बैठूंगा. ऐसा नहीं होता यार. कंटिन्यू करते रहो. बीच में एक एक दो टॉपिक जो कहीं की मार्क करके रखो. मार्क एवरीथिंग. यू शुड हैव अ प्रिंट ऑफ दिस केमिकल इंजीनियरिंग गेट सिलेबस ऑन योर टेबल, स्टडी टेबल. अगर आप बैठ के पढ़ते हो तो, लेट के पढ़ते हैं तो वो अलग मैटर है ना. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हाउ कंसंट्रेटेड यू आर while doing these revisions and practice. ठीक है, बहुत बातें होगी, इसको कंटिन्यू करते हैं. डोंट वरी. ठीक है, बस कुल मिला के मतलब ये है कि यार पेपर आपने देना है, अपने हिसाब से तैयारी करो कि आपका क्या पूरा हुआ है और आपका क्या पूरा नहीं हुआ है ना. what you have revised, what you have done, what you have conceptually done, what you have in which subjects you have done the practice of the questions. ठीक है, तो अपने हिसाब से तैयारी करो भाई, है ना. दूसरे के हिसाब से तैयारी ना करो. tau I s plus 1. So I am dividing the entire equation by Kc Kp, right? So this becomes tau p tau I by Kc Kp. So you can say that this is effective tau p square and s square. What is this? Tau I into tau I by Kc Kp, tau I by 1 plus Kc Kp divided by Kc Kp into S plus 1. ठीक किया गया. Kc Kp, that is tau ps plus 1. This tau p is the process transfer function. So can you tell me what is the value of, अच्छा, you can also see that this is a second order system, but it is also having some numerator dynamics. मैंने आपको बताया था what is the role of numerator dynamics on the process. Fine. Can you find the effective zeta of this system? Try to find out. If you find that effective tau of this system, tau effective for the system is, अच्छा एक चीज और समझो कि if it is a second order system, you have to find tau and zeta. Is there any role of numerator? No. For finding tau and zeta, only denominators are required. It is a second order system, and this is tau effective is root of tau p tau I by Kc Kp, because this is tau square s square, right, plus 2 zeta plus this is 2 zeta effective, 2 zeta tau effective. And what is tau effective? Tau p tau I by root of Kc Kp. So 2 zeta tau p is equal to this.
टाउ आई 1 प्लस के सी के पी, है ना। देखो ऐसी बहुत सारी चीजें यहां से निकाली जा सकती है, यू कैन हैव वेरियस कंक्लूजन्स, हाँ। सो आई एम जस्ट doing few, I am just calculating few conclusions here. Okay, so PI controller was controlling this and now we have zeta effective as, थोड़ी calculations है यहाँ पे, कर लो इसको. What is the value of zeta effective? So yeah, let me make some space here. I'll calculate. Zeta effective is equal to, zeta effective is equal to tau I into 1 plus Kc Kp by Kc Kp 2, right, and root of Kc Kp by root of tau p tau I, है ना. This gets cancelled here and there will be another square root present here, tau p tau I. So you can have tau I again cancelled, okay, and there will be a square root present here. देखते हैं क्या बना. This is root of tau I into 1 plus Kc Kp, ठीक है, that divided by 2 root of tau p and root of Kc Kp. अब इसको आपको जितना सिंप्लीफाई करना है वो कर सकते हो, है ना. दिस इज Kc Kp, दिस इज tau p. आप डिवाइड करोगे अगेन इट विल बी simplified. Now you can see here that this is the zeta effective of the system, and earlier the zeta effective was what? Zeta था ही नहीं earlier, because earlier it was a first order system. Now your system is a second order system with this value of zeta. Fine. तो ये चीजें आपसे फॉर्मूले के टर्म्स में पूछी जा सकती है. सपोज अगर कोई लेंथी न्यूमेरिकल बनाना हुआ तो इस पर लेंथी न्यूमेरिकल भी बन सकता है. सो एटलीस्ट यू शुड डिराइव दिस, कि हाँ मैं डिराइव कर पा रहा हूँ, आएगा तो मैं संभाल लूंगा. नाउ व्हाट्स अबाउट, so of course you can see that the integral action present in the PI controller has increased the order of the overall system. Now let's talk about the offset. नोट कर लेना इसको, है ना. Let's talk about offset. Let's see that a unit step change in the set point, is there any offset or not? Okay, so offset calculation, let unit step change in set point, right? If unit step change in set point, then what is offset? Direct formula लिखो, है ना. Unit step change, so that should be change in set point is 1 minus change in ultimate value s into ys. Ys is x bar s is 1 ys, and x bar s into gs. Gs is servo closed loop transfer function. This is gs. चलिए लिखिए इसको Kc Kp. I can write any gs. मैं इसके बाद वाला भी लिख सकता था, बट यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा आसान होगा. tau ps plus 1, tau is plus Kc Kp and tau is plus 1. ठीक है. Now s tending to 0. So s cancel out and s tending to 0. S tending to 0, this becomes Kc Kp. See what you are getting. 1 minus the numerator is Kc Kp, because s is tending to 0. What about this? This is 0 and this divided by 0 plus 1 into Kc Kp. What is 1 minus 1? Offset is 0. Fine. The question arises कि sir, will the offset be 0 for regulatory problem also? Yes. And what will be the order of the regulatory function? You can make, and it will be again second order transfer function. So offset will be 0 in both servo and regulatory problem. Offset will be 0 in both servo and regulatory problems. समझ आई बात है, ठीक है. So these are the tau effective, zeta effective, like this you can calculate. You can see that zeta effective is the part, see Kc Kp tau p tau, everything is effective zeta, is affecting zeta. Okay, so अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि find zeta effective, then what you have to do ultimately, you have to write the transfer function in the standard form, find the value of zeta, and that's done. Okay,
आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा. So let us talk about now I'm not going to take PI controller with the second order process because the final transfer function will become third order. Now that will be a problem. तो क्या कर सकते हैं अब? You can take PD controller, and what will happen in PD controller? What do you think? In PD controller the offset will be 0 or not? Obviously अगर आपने integral action के बारे में पढ़ा, then you know that offset is becoming 0 due to integral action. So if PD controller is there, I action is not there, then definitely offset will be non-zero. And in fact, you should know that derivative action का offset पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जो offset P action में आया था, same offset you will get in PD controller. Means when D action is included. Okay, so we have fourth option. So you can either take PD controller, you can check what is the offset, you can take PID controller and first order system, and then you can see. You'll find that PD controller, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पे, PD controller controlling a first order system. What you have to do? PD controller controlling a first order. You have to check कि order change हो रहा है कि नहीं हो रहा and find the offset. First order system. ये आपको करना है. Fine. Fifth, PID controller controlling a first order system. ये भी आपको करना है. And you have to find offset. Right? First order system. These fourth and fifth part, you are going to find that D action has no extra effect on offset. D action makes the response better, means it is going to make the response robust. It is going to make the control better. I told you that D action is like a friend, your strong friend, your big brother. He is going to help you in all these situations. So D action knows the future and therefore it can help you. Okay. So PID controller, offset will be 0 here. Offset will be non-zero, and this offset will be same as the offset we obtained in case of P action. Right? So मैं ये चीजें लिख दे रहा हूं, but you have to prove it mathematically. In PD controller, and of course आपको यहाँ पे process कैसा लेना है? First order, just to maintain the derivation, simplicity of the derivation. In PD controller, the offset will be non-zero. Offset will be non-zero and same as of P action or P controller. Fine. Similarly, in PID controller, because integral action is present, PID controller offset will be 0. Offset will be 0. You'll also observe that in PD controller, the order of the system is not increasing. In fact, D action is adding a numerator. Right? D action is adding a numerator. It is making the response fast actually. होता क्या है कि देखो जब डिनोमिनेटर में एक एक करके फैक्टर जुड़ते रहता है, रिस्पॉन्स बिकम स्लो. दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड लैग. एंड न्यूमरेटर में एक एक करके फैक्टर्स जुड़ते रहते हैं, द रिस्पॉन्स बिकम फास्ट. दैट इज कॉल्ड लीग. एंड दैट इज वाई टाउ 1 + 1 by टाउ 2 + 1 is called a lead lag element. Right? So these are some concepts of process control which normally books don't discuss. So fourth and fifth. Now, of course मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आप ऐसा कुछ ना कर पाओ, ऐसा कुछ है, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा. ठीक है, the same way I proved for the previous cases. Sixth case, please mark star here. And now sixth and seventh case, I'll be considering this as the exception case. P controller controlling a purely capacitive process. I hope you remember what was the transfer function of purely capacitive process. Let's see and let's analyze this mathematically. Plus minus, ठीक है. We have a P controller, so this goes Kc. Process transfer function. What was the process transfer function? Kp by S, है ना? Let's take some examples also. Let's take 2 by S. Can be anything. It can be 2 by S,
आप केसी की वैल्यू भी ले सकते हो, लेट्स टेक केसी इज इक्वल टू 3, नॉट अ प्रॉब्लम। कोई रिलेशन नहीं है कि सर ये ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट। लेट्स टेक जीएफ इज इक्वल टू 1। वी हैव, अभी सर्वो की बात करते हैं, डोंट वरी, सर्वो की बात करते हैं ना। लेट्स कीप द प्रॉब्लम सिंपल। जीएम इज इक्वल टू 1, विल टॉक अबाउट सर्वो प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दिस इज आर, दिस इज सी, एंड वी आर राइटिंग हियर सर्वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। कैसे लिखेंगे बताओ? लिख लो सबसे पहले, इट इज अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल लूप, सिंपल फीडबैक कंट्रोल लूप, तो ट्रांसफर फंक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखिए सी बाई आर, सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू 6 बाई एस डिवाइडेड बाय, दिस इज ऑल्सो 1, सो 1 प्लस 6 बाई एस। सिंपल रख दिया था थोड़ा, है ना। 6 बाई एस एंड 1 प्लस 6 बाई एस, करेक्ट। So that becomes 6 by s multiplied by s plus 6. I think this is the closed loop transfer function, correct? ठीक है? No, s will be cancelled, right? Sorry, s will be cancelled, I think. S plus 6, yeah. Now, let's just directly calculate the offset for the unit step change. Assume unit step change in set point. Assume unit step change in set point. Let us find the offset. कैसे करेंगे offset calculation? Unit step change in set point. So change in set point is equal to 1 minus ultimate value. कैसे निकालते हैं ultimate value? S into x bar s into gs. Which gs? Servo. Because मैं set point में change कर रहा हूँ. Right? What you are observing? That here, what you are observing, that assume unit step change and disturbance, okay, s tending to 0. What is the offset? 1 minus 6 by 6, 1 minus 1, what is the offset? 0. What we have discussed that a proportional controller always produces a non-zero offset. यही discuss किया था. But what is this? This is a proportional controller. What is special here? That proportional controller is controlling a purely capacitive process. So this is a kind of exception, right? Exception. ठीक है? Exception that in case of P controller also we can have a non-zero offset. Very important to remember. अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर क्या ये एक ही this exception है? I don't know. There may be more exceptions. One I am going to discuss again, but there may be further more exceptions. तो मान लो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम दिया है, there is a P controller. आपने कहा कि अरे ये तो बेवकूफ है, इतना बड़ा इन्होंने डायग्राम दे दिया, मुझे तो पहले ही पता है P कंट्रोलर का ऑफसेट नॉन जीरो होता है, आप नॉन जीरो मार के चले आए। बाई चांस इट इज पॉसिबल कि वो किसी तरह का एक्सेप्शन हो, तो आप बस चेक कर लेना। देखो ऑफसेट निकालने का यहाँ कोई चेंज नहीं है, बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट this is producing no offset, zero offset. So that is very special about this. Okay, and then suppose in the same case, when P controller, in same case, we can also calculate offset. We can also calculate offset for a regulatory problem. Offset for रेगुलेट, आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक बार ऑफसेट कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है कि कहीं वो एक्सेप्शन तो ना हो, है ना। बिकॉज यू कैन सी हियर क्लियरली मैथमेटिकली इट इज वेरी ऑब्वियस दैट देयर इज नो ऑफसेट इवन फॉर दिस P action. We are using P action for controlling a purely capacitive process. So what is so special? Special is the process. आप इसकी जगह फर्स्ट ऑर्डर ले लो, सेकंड ऑर्डर ले लो, थर्ड ऑर्डर ले लो, ऑफसेट विल बी जीरो, राइट? So in same case, we can also calculate offset for regulatory problems. So what we have learned here, what is important to understand that अगर गेट में क्वेश्चन आ रहा है कि यार बेटा ऑफसेट निकालो, और मान लो पीआई कंट्रोलर लगा हुआ है, आपने कहा रही तो पागल है, पीआई में ऑफसेट निकालने को बोल रहे, पीआई में तो ऑफसेट हमेशा जीरो होता है, आप जीरो मार के चले आए। हो सकता है दैट इज अ काइंड ऑफ न्यू केस, है ना भाई एक क्वेश्चन बनाने के बच्चों पे जो आपके पेपर सेटर्स हैं उनको क्वेश्चन पर क्वेश्चन पैसे मिल रहे हैं यार, बंदे ने मेहनत कर ली होगी, हो सकता है ढूंढ लाया हो कहीं से,
है ना। तो आप कितना एक्सेप्शन से याद रखोगे, लेकिन हाँ ऑफसेट निकालने का मेथड तो याद रख सकते हो, बस एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मेक श्योर इन द एग्जाम दैट यू आर स्पेंडिंग द टाइम ऑन द क्वेश्चन एंड मेक दैट टाइम काउंट। ऐसा ना हो कि यार टाइम भी लगाया और गलत भी कराए, तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादा परेशानी होती है कि यार मतलब इतनी कैलकुलेशन के बाद कैसे गलत हो गया, है ना। तो टाइम लगाना है तो मेक श्योर दैट यू गेट द राइट आंसर। So in the same problem we can also calculate offset for regulatory problems. Now you'll say कि सर इसमें तो disturbance है ही नहीं है तो भाई बना लेना। And one more thing, if GD is not given, if GD is not given, तो क्या बताया था आपको, then consider GD is equal to GP, ठीक है। मतलब देखो करेक्ट कर लो यार एक बार, कोई बात नहीं, इसको ना चेंज कर लो। मतलब GD होगा तो है, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टर्बेंस बनाए ना हो, बनाएगा बट पॉसिबली आपको वो GD नहीं देगा। अगर GD नहीं दिया हुआ देन आई टोल्ड यू दैट GD इज मॉडल्ड इन द सेम वे वी मॉडल GP। गेट में ऐसा नहीं होता, GD प्रोवाइड करा देते हैं। सो GD इज 2/s, सो लेट अस राइट रेगुलेटरी ट्रांसफर फंक्शन, रेगुलेटरी ट्रांसफर फंक्शन विच इज D/s डिवाइडेड बाय RS। यही है रेगुलेटरी ट्रांसफर फंक्शन विच इज GD। सो 2/s, मैं GD को GP के बराबर ले रहा हूं। ध्यान रहे कि ये तभी करना है जब GD नहीं दिया है। अगर GD दिया है तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत पहले बताया कि क्वेश्चन में जो दिया है अगर, तो फिर सारे थंब रूल भूल जाओ अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो। सो 2/s डिवाइडेड बाय 1 + 6/s, यही आएगा। ओके, सो दैट बिकम्स 2/s + 6। नाउ ऑफसेट for unit step change in disturbance, offset for unit step change in disturbance, ठीक है। यूनिट स्टेप चेंज इन डिस्टर्बेंस कर लिया तो व्हाट इज द फॉर्मूला, यहाँ 1 लिखूं या 0 बिकॉज इन द फॉर्मूला दिस इज चेंज इन सेट पॉइंट -s 1/s tending to 0, सॉरी, नॉन जीरो ऑफसेट। तो यहां तो नॉन जीरो आ रहा है जैसा कि पहले आता था, लेकिन यहां 0 आ गया। सो दिस वाज वन एक्सेप्शन व्हेन P controller controls a purely capacitive process, then for servo problems the offset is 0, but for regulatory problems the offset is non-zero। अच्छा, अब मान लो यहां GD 2/s ना देके 1 दे दे, अगर दिया है क्वेश्चन में तो फिर कैलकुलेट करके बता देना भाई क्या आ रहा है। कैलकुलेट तो करना आता है ना, ऑफसेट कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको देखो बहुत बार बता रहा हूं, ऑफसेट कैलकुलेशन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रखना है। अच्छा, इफ आई आस्क यू दैट फॉर कैलकुलेटिंग द ऑफसेट व्हिच ट्रांसफर फंक्शन आई एम यूजिंग, क्लोज लूप और ओपन लूप, देखो फॉर कैलकुलेटिंग द ऑफसेट आई एम यूजिंग दिस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ध्यान रहे, ठीक है। ओके, दिस वाज द 6th केस। लेट मी टेक द 7th केस। लिखते चलो, है ना। Okay, so 7th case, PI controller controlling फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। आप बोलोगे सर ये तो पहले भी कर रखा है, कर तो रखा है, देखो क्या खास है इसमें। PI controller controlling a first order system, right? But GM is not equal to 1, means it's not a unity feedback control system, means it is not a unity feedback control system, ठीक है। ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं है। व्हाई? बिकॉज GM इज नॉट इक्वल टू 1। बाकी अच्छा, व्हाट अबाउट प्रोसेस, इज इट नेसेसरी टू हैव फर्स्ट, इट कैन बी एनी, अब देख लो एक बार, इट कैन बी एनी प्रोसेस। PI कंट्रोलर एक काम करता है, सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दोस कॉन, चलेगा। दिस इज द PI एक्शन, KC इज इक्वल टू 1 एंड टाउ इज इक्वल टू 1, सिंपल। ओके, लेट्स टेक अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस 2/s + 1, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस।
ओके, देयर इज नो रिलेशन हियर, आप कुछ भी प्रोसेस ले सकते हो. सॉरी, GF इज इक्वल टू 1. Y is P. GM is equal to 3. सर क्या ये 3:2 से ज्यादा होना चाहिए? पता नहीं. सर क्या ये 3 2 + 1 होना चाहिए? 2 + KC के बराबर होना चाहिए? पता नहीं. सर क्या ये 3 2 + 1 होना चाहिए? कुछ भी रख लो, बस 1 मत रखो. देयर इज नो रिलेशन, आई हैव जस्ट चोजन द वैल्यू रैंडमली. फिर भी अगर आपको कोई ख्याल आ जाए, अगर आपको कोई ख्याल आए कि सर ऐसा करूंगा तो वैसा होगा क्या, तो करके देखना पड़ेगा. उसके लिए कोई रूल नहीं है. यू जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट ऑफसेट इन दैट केस. फिर आपको जितने रूल बनाने हैं बनाते रहो. ठीक है, निकालिए ऑफसेट. ऑफसेट कैलकुलेशन फॉर यूनिट स्टेप चेंज इन सेट पॉइंट. चलिए, सेट पॉइंट. सो ऑफसेट कैलकुलेशन वी हैव टू फाइंड हियर यूनिट स्टेप चेंज इन सेट पॉइंट. कैसे करें? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट राइट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. पहले तो लिख लेते हैं. व्हाट इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन? सर्वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन is s plus 1 by s multiplied by 2 by s plus 1. अरे तो कैंसिल हो गया यार. थोड़ा सा मतलब एक काम करते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते ना, 1 plus 2 by s कर लेते हैं इसको. कोई दिक्कत नहीं है कैंसिल हो जाने से भी, बट अदरवाइज आपको फील होगा कि नहीं ये इसी के साथ ऐसा होगा, बाकी के साथ नहीं होगा. ठीक है, s plus 2 by बन जाएगा ना, kc into 1 plus 1 by tau s. तो tau i को मैं 0.5 ले लूँ, then it will become 2 by s. okay, so that divided by 1 plus 3 into s plus 2 by s into 2 by s plus 1. Correct? What is closed loop transfer function now? ठीक है, let's take the servo closed loop transfer function. Let's write here servo closed loop transfer function is equal to, if you take the LCM, denominator will be cancelled. This will be 2 into s plus 2 into s plus 2 divided by, this will be s into s plus 1, 3 into 2 into s plus 2. So 6 into s plus 2. That is the closed loop transfer function. ठीक है ना? Unit step change in set point. So 1, what is offset? Offset is equal to 1 minus s into, देखो ये हमेशा 1 by s हो ऐसा नहीं है. ये होता यही है कि आप रट लेते हो कि नहीं हमेशा 1 by s होता है. डिपेंड्स अपॉन x, आपने कितने का डिस्टर्बेंस दिया है. You have done the disturbance in the set point, but what is the magnitude of that? Because it is x bar s. X bar s is the Laplace of input. अगर आप 3 यूनिट का स्टेप इनपुट दोगे, it will become 3 by s, and this will become 3 in that case. और ये भी मत रखना कि ये और ये हमेशा सेम होंगे, ऐसा नहीं है. रेगुलेटरी में कहाँ सेम होता है? It is 0, still that is 1 by s. So these are the small points for calculation of offset. S into s plus 1 plus 6 into s plus 2. Fine. Now s tending to 0. So this is offset 1 minus s को 0 put करो, 4, s को 0 put करो, 0 into this becomes 0, 6 into 2, 12. So 1 minus 1 by 3. क्या देख रहे हो आप? Even I was using a PI controller for controlling a first order process, I'm getting some offset. क्यों? ये क्या हो गया? Mathematically it is, आप देख लो, mathematically it is fine. I'm getting an offset. अब आप पूछोगे सर रेगुलेटरी में क्या होगा? करके देख लो रेगुलेटरी में. अगर GD मैंने नहीं दिया तो GD को 2 by s plus 1 ले लेना. फाइन. द प्रॉब्लम इज अच्छा हाँ, द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे ऑफसेट क्या, अच्छा रेगुलेटरी में 0 आएगा क्या? आप देखोगे रेगुलेटरी में भी 0 नहीं आएगा. द प्रॉब्लम हियर इज समथिंग एल्स. The problem is not with the process. The problem is not whether we are talking about servo mechanism or regulatory mechanism. Problem is something else. एक बात समझो कि आपने, या मतलब सपोज आपके गार्जियन ने आपके पीछे जासूस लगाया कि यार इसकी खबर लेते रहो. आपके गार्जियन ने बोला कि भाई आपको पढ़ने दिल्ली जाना है, ठीक है, लेकिन उनको आप पे थोड़ा सा डाउट था
कि ये लड़का कहीं हाथ से निकल ना जाए, तो उन्होंने साथ में एक और को भेजा अटैचमेंट कि जा तू भी तैयारी कर, और तेरा काम तैयारी तो करना है ही, साथ में इस पे नजर रखना भी है, राइट। अब जो आपका फ्रेंड आपके साथ आया प्रिपरेशन करने, है ना, उसका गेन यूनिटी नहीं था, उसका गेन 3 था। उसको आपने बीच में क्या करा लिया, उसको आपने पटा लिया कि नहीं कि काम कर, तू घर पे ऐसी ऐसी खबर देते रहना। सो होगा क्या, ही इज कंटिन्यूसली वॉचिंग दैट यू आर नॉट वेल, आई मीन जिस काम के लिए आप आए थे आप वो नहीं कर रहे हो, है ना। आपको मेट्रो में घूमने में स्वाद आ रहा है, आपको राजीव चौक जाना है, आपको हौज खास जाना है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, है ना। बट उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसने क्या किया, ही इज गोइंग टू गिव द फीडबैक टू योर गार्जियन कि नहीं सर, नहीं कल जी लड़का तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस बार हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द फीडबैक विच इज गोइंग टू योर गार्जियन इज नॉट करेक्ट। इज इट करेक्ट? नो, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग what you were supposed to do, and the feedback which is going to your guardian is not correct. So the guardian from there is going to take some action. I mean he don't know that हो क्या रहा है, but उनको जो feedback मिल रहा है according to that he is going to take action that he'll call you कि अरे बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा सुन के क्या वो बताएंगे नहीं कि आप उन्होंने सुना है ऐसा कि बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे ये उम्मीद है वो उम्मीद है, but ultimately what will be the output will be according to his his whatever he or she thinks, उसके हिसाब से आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। द फीडबैक विच वॉज गोइंग टू द गार्जियन दैट इज नॉट करेक्ट, एंड इफ द फीडबैक इज नॉट करेक्ट, इफ द इनपुट इज नॉट करेक्ट, द आउटपुट मीन्स द डिसीजन विल नॉट बी करेक्ट। इफ डिसीजन इज नॉट करेक्ट देन द इम्पैक्ट विल नॉट बी करेक्ट, एंड दिस इज द रिजल्ट। ये निकल के आएगा फिर, ठीक है, कि करने तो ये गए थे, अब ये करके आ गए, ठीक है। अब यहां देखो, द गेन इज 3, द गेन इज 3, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, सपोज सेट पॉइंट इज 5, व्हाट इज सेट पॉइंट 5, बट समहाउ ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, ठीक है, यहां मान लो मैं तो सेट पॉइंट सर्वो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। सपोज सेट पॉइंट 5 था, आपने सेट पॉइंट को चेंज करके क्या कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है। नाउ द सेट पॉइंट इज मेड 8, यूनिट स्टेप चेंज दे रहे हैं, चलो 6 कर दिया, सेट पॉइंट को 5 से 6 कर दिया, बट ये अभी भी 5 था, फाइन, दिस वाज स्टिल 5। व्हाट इज द एरर? एरर इज 1, न्यू सेट पॉइंट एंड योर करंट वैल्यू 6 minus 5, error is 1. So error was measured and then sent here, but this gm is equal to 3, तो ये 3 उस measured value के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। what is the measured value? Don't say 1, ये error measure नहीं करता है, ये value measure करता है। what is the value? 5 value goes here, 3, 5 into 3 becomes 15. What is the set point? 6. What is the value it is getting? 15. But what is the actual value? 5. तो error कितना आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। But what error this comparator is going to calculate? 6 minus 15. What is 6 minus 15? Minus 9. So the error which the comparator has calculated, is it correct? No. तो कंट्रोलर को जो फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक ही गलत है, तो कंट्रोलर का काम तो गलत होगा ही। Controller is there to control the things, but there should be someone who gives the feedback to the controller. If the controller is getting right feedback, of course it will do the right job. And what is its right job? To make the offset equal to 0. But the input which is going to the controller, मैं लिख लो नंबर यहाँ पे, मान लो ये 5 था, है ना, and you change the set point to from 5 to 6. This is a servo problem. What is the error? Error should be 6 minus 5 is equal to 1, but this signal is 5 into 3, this signal is 15. What is the error? The error is equal to 6 minus 15 is equal to minus 9, ठीक है। 6 minus 15 is equal to minus 9. तो error जा क्या रहा है कंट्रोलर में? minus 9. But what is actual error? अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करो, what is actual error? 6 minus 5, the actual error is 1. So the error which is going to the controller, that is not correct. So the output of the controller, that is not correct. So the impact of the controller, that is not correct. And what is not correct impact? That the offset is non-zero. So even in रेगुलेटरी प्रॉब्लम आप करके देख लेना मैथमेटिकली। अब इतना समझ गए हो, देखो अब प्रॉब्लम कैसी भी हो, जब जानकारी ही गलत मिल रही है तो फिर असर तो गलत ही होगा, है ना। आपको जब फीडबैक ही गलत मिल रहा है तो फिर आप हाउ यू आर गोइंग टू टेक करेक्टिव एक्शन। फिर चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो,
आपको फीडबैक ही गलत मिल रहा है। जब यही यूनिटी नहीं है तो ये कभी भी यूनिटी नहीं होगा, तो ऑफसेट 0 नहीं आएगा। ओके, इवन इन रेगुलेटरी प्रॉब्लम PI controller with non-unity feedback, PI controller with non-unity feedback is going to give feedback gives non-zero offset. सर कैसे होता है, चेक करके देख लेना मैथमेटिकली। non-zero offset, it means PI controller gives zero offset only if, इसके बाद what is special here, I'm not talking about these things, special is this, only if it is a unity feedback system. Now my question is, if GM is equal to, suppose this is the thing, क्या यहां पे offset 0, rest everything is same, but I have replaced GM from 3 to this, or if GM is equal to, अब आपको ये दो काम और करना है। मैंने इससे पहले भी आपको बोला, चेक द ऑफसेट फॉर PD एंड PID। नाउ यू टेक द PI एक्शन, टेक GM इज इक्वल टू दिस, टेक GM इज इक्वल टू दिस। बताओ क्या ऑफसेट 0 होगा यहाँ पे? देखो इसमें और इसमें क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन G इज इक्वल टू 1 एंड G इज इक्वल टू 1/2s+1? इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या लगता है? द फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन इज अ प्योर गेन एलिमेंट, the second transfer function is a first order transfer function. In both the cases, if I ask you what is the value of gain, the gain is equal to 1. And what is the purpose of gain? Gain is multiplied by input to give output. It means in both the cases, the output of this measuring element will be the actual measurement. However, this will be the sudden output. I mean, it will be like instantaneous output. जैसे ही input मिलेगा, there will be output, and it will take some time. Because it's a first order lag, it will be like this, right? But ultimately जो output ये देगा वो उतना ही देगा. If it is 5, output will be 5 in this case also, and in this case also. In this case, output will be 15, however not instantaneously, it will take some time. So what is the concept? Concept है कि भैया gain जो है ना, gain इसका measuring element का gain 1 होना चाहिए, तो PI controller 0 offset देगा. But if measuring element gain is not equal to 1, तो PI कंट्रोलर 0 ऑफसेट नहीं देगा, बिकॉज अल्टीमेटली इफ मेजरिंग एलिमेंट गेन इज नॉट इक्वल टू 1, द वैल्यू रिपोर्टेड टू द कंट्रोलर विल नॉट बी करेक्ट। सोचो अगर इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दूं तो कितने लोग फंसेंगे इसमें। अब या तो अगर नहीं फंसेंगे, दे आर गोइंग टू चेक, इट्स वेरी ऑब्वियस। हाँ, अब आप पूछ सकते हो कि सर इफ आई टेक अ P कंट्रोलर, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस एंड नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो क्या होगा? भाई P कंट्रोलर में वैसे ही ऑफसेट 0 नहीं रहता, ठीक है। अब आपने फीडबैक भी नॉन यूनिटी लगा दिया तो ऑफसेट तो 0 नहीं रहेगा। बट इफ देयर इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन गेट एग्जाम, इट्स माय सजेशन कि थ्योरेटिकल ऐसे दिमाग लगाने से पहले एक बार मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज टू एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस इन विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल प्रोसेस। इन दिस केस इट वाज इजी, सो आई डिड, है ना। हर बार आप कर पाओ एक्सप्लेन जरूरी नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स अगर आपको बोल रही है कि ऑफसेट पी एक्शन में ऑफसेट नॉन जीरो आ रहा है तो सही बोल रही है मैथमेटिक्स। PI कंट्रोलर के केस में ऑफसेट नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, नॉन जीरो जीरो, हाँ नॉन जीरो आ रहा है, इट इज ट्रू। समटाइम्स यू आर एबल टू रिलेट दिस लाइक दिस, आई रिलेटेड इट, दैट आपको जो फीडबैक मिल रहा है वो गलत है। अब आपका कंट्रोलर गलत फीडबैक के हिसाब से काम करेगा तो उसका एक्शन कैसे सही हो सकता है, राइट। दिस वॉज अबाउट द सेकेंड एक्सेप्शन। अब मैंने इसमें आपको ये सारी चीजें बता दी, करके देख लेना क्या आता है, करना जरूर इसको। हाँ, आप ये आपके लिए प्रैक्टिस है, एक बार ऑफसेट निकालने की प्रैक्टिस है, एक तरह से समझ लो। ऑफसेट में आपको जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए, जरा सा भी नहीं। हाँ, अगर आप ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के छोड़ दोगे तो ऑफसेट में आप गलती करके आओगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोज लूप एनालिसिस। मैंने P एक्शन लिया, PI एक्शन लिया, है ना, एंड देन दीज टू एक्सेप्शंस ऑल्सो। PD और PID नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद से उसको करके देख सकते हैं। यू कैन अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ योर डेरिवेशंस। यू कैन चेक दैट PID में ऑफसेट 0 आ रहा है और PD में ऑफसेट वही आ रहा है जो P में था। Fine. All these things we have discussed in the closed loop analysis. Now you can also attempt all the gate problems on offset, on order, right, on the response of closed loop system. I'm going to take few problems. The question is here, you can read the question. It says the set point of the control system shown in the figure is a unit step is given a step change of 0.1 units. Means this is a servo problem.
सेट पॉइंट में चेंज है मींस इट इज अ सर्वो प्रॉब्लम. ओके, एंड इन सर्वो प्रॉब्लम इफ आई आस्क यू व्हाट इज x bar s means what is the Laplace of unit step change, not unit step, 0.1 step change, so that is 0.1 by s. ठीक है, determine the offset and the period of oscillation and the diagram is also given. डायग्राम अगर क्लियर ना हो तो मैं एक बार बना दे रहा हूं, क्लियर होना चाहिए वैसे, प्लस माइनस, एंड वी हैव अ P controller having controller gain is equal to 1.6. And then there is a process. The process is second order, which is 5 by s plus 1 by 2s plus 1. 5 by s plus 1 and 2s plus 1. This is C, R, set point, and nothing else. Simple रखा है ब्लॉक डायग्राम को. There is no measuring element. There is no disturbance shown. है ना? So obviously the process was of second order. You are employing a P controller. So with P controller, it is still remaining second order. But we have to find what is the offset and what is the period of oscillation. Of course, second order का इसको एक काम करते हैं. Let us first write the closed loop transfer function. अच्छा, एक काम ये ध्यान देना कि आपको period of oscillation निकालना है. What is T? फॉर्मूला याद है किसी को T का? 2 pi zeta. Time period निकालना है. That is time period is 2 pi by omega. Do you remember this? Omega d means omega with some damping. Time period is 2 pi by omega. Now what is omega? Sin omega t, cos omega t, right? I told you that you have to remember at least omega, the frequency of oscillation. And how you are going to find the frequency of oscillation? Do you remember if zeta was less than 1, the roots were complex imaginary pairs, c1 cos beta t plus c2 sin beta t. और बीटा क्या होता है? बीटा होता है आइटा का कोफिशिएंट, और आइटा का कोफिशिएंट क्या था? रूट ऑफ व्हाट वाज द रूट माइनस जीटा बाय टाउ प्लस माइनस रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 बाय टाउ. बट जीटा इज लेस देन 1, सो आई विल राइट दिस एज 1 माइनस. सो व्हाट वाज ओमेगा? ओमेगा डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाउ. मुझे नहीं याद था, मैंने इस तरह से याद किया. एक बार जैसे ही मैंने फॉर्मूला रिकॉल करके लिखा, अब ये मेरे माइंड में बहुत अच्छे से इंप्रिंट हो गया. कम से कम 50 बार नोट पढ़ने से तो अच्छे से इंप्रिंट हो गया. सो रिकॉलिंग एंड यूजिंग द फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट आई टेल यू कि आपको किस तरह से रिवाइज करना है. व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इवन इफ इट इज अ सिंपल फॉर्मूला, यू नो कि नहीं मुझे याद है, फिर भी देखो मत. ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू रिलेट इट विद अदर कॉन्सेप्ट, ट्राई टू रिलेट इट. मैंने इसको कैसे रिलेट किया? मुझे ओमेगा के फॉर्मूले में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी. अगर मैं यहाँ पे अभी नोट उठा के देख लूंगा, ये कभी याद नहीं होगा, और याद होगा तो मुझे कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा कि मुझे याद है कि नहीं याद है. दिस इज द प्रॉब्लम, है ना? क्योंकि देखो, अगर चीजें याद हो गई आपको, तो भूलना आपके हाथ में नहीं है. भूलना हमें नहीं सिखाया गया. हम अपनी मर्जी से भूल नहीं सकते किसी चीज को. आपने बचपन में लर्न करी थी ABCD 1 2 3, जो 6th क्लास में आप पढ़ते हो, जो अलजेब्रा A + B का होल स्क्वायर, वो भूल के बताओ, आप नहीं भूल सकते. आप कितनी भी कोशिश कर लो, भूलना आपके हाथ में नहीं है. और अगर आप भूल रहे हैं, इसका मतलब आपने याद नहीं किया. ठीक है, तो याद तभी होगा जब वो बार बार यूटिलाइज होगा, बार बार आप गा के उसको लिखोगे. ऐसा नहीं कि देखते रहोगे. अगर आपने बचपन में सारे फॉर्मूले केवल देखे होते तो अभी सारे भूल चुके होते. A + B होल स्क्वायर आपको कभी भूलोगे नहीं, A + B होल स्क्वायर. बट शायद A + B होल क्यूब, शायद थोड़ा सा कई बच्चे A + B होल क्यूब का फॉर्मूला भूल चुके होंगे. हो सकता है, बिकॉज उसको ज्यादा आपने यूज नहीं किया. वेरी सिंपल. तो यूज करना है, रिकॉल करके यूज करना है. सो ओमेगा डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई टाउ पी. नाउ दिस टाउ पी and this omega square, they are asking you the time period for this entire closed loop. So please note that here sorry, zeta and tau p should be found from closed loop transfer function, not from this second order transfer function. ऐसा नहीं करना कि यहीं से zeta और टाउ पी निकाल के यहां पुट करके आपने निकाल लिया. Now this is not just one process, this is the entire loop. So first of all, write closed loop transfer function. कौन सा लिखोगे, सर्वो या डिस्टर्बेंस? सर्वो क्लोज लूप. वैसे भी डिस्टर्बेंस ट्रांसफर फंक्शन आपके पास नहीं है. सो सर्वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी 5 into 1.6 divided by s plus 1, 2s plus 1, and that divided by ऑफसेट भी निकालनी है आपको, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकालना है. ऑफसेट के लिए आपको बताया मैंने कैसे निकालना है ना. 1 + 5 into 1.6 divided by
s plus 1 2s plus 1. ठीक है, take LCM. This becomes 5 into 1.6 divided by s plus 1 2s plus 1 plus 5 into 1.6. This is the closed loop transfer function. अगर आप सीधा यहीं से निकाल दोगे zeta और tau, क्वेश्चन गलत हो जाएगा. They're not talking about the response of an uncontrolled second order system. We are talking about the response of a controlled second order system. And when it is a controlled second order system, of course, response में फर्क पड़ेगा. Means zeta of the controlled second order system will be different than the zeta of the uncontrolled second order system. Similarly, the tau of controlled order system should be different than the tau of uncontrolled second order system. So this is the system 5 into 1.6. आप इसको थोड़ा सा standard form में पहले rearrange करो. So CLTF becomes 5 into 1.6. So that becomes 80, right? But okay, that is 8. And divided by this is 2s square. 2s square plus s plus 2s. So that becomes 3s plus 1, right? Plus 8. That becomes 9, right? So this equation becomes 8 by 9, 2 by 9 s square plus 3 by 9. So that becomes 1 by 3 s plus 1. ठीक है क्या? Okay. So this is the standard form of the second order system. Now we have written this entire closed loop transfer function into the standard form of second order system. Now what is tau p square of this system? So tau p is equal to, I think, root of 2 by 9. So that becomes root 2 by 3. That is tau p effective, and 2 zeta effective into root 2 by 3 is equal to 1 by 3. So that gets cancelled, and zeta is equal to 1 by 2 root 2. ठीक है, that is the value of zeta. तो zeta निकल गया, tau p निकल गया, and offset निकाल लेते हैं. I think I can erase this part. Offset के लिए closed loop transfer function चाहिए, वो है we have to find offset for servo, I mean change in set point, and the magnitude is this. Now please be careful कि आदत होगी हमारी कि ऑफसेट निकालते हैं फॉर सर्वो प्रॉब्लम वी विल राइट 1 माइनस, या 1 माइनस नहीं आता. आई टोल्ड यू दैट चेंज इन सेट पॉइंट, पहले लोग फॉर्मूले को ऐसे रट लेते हैं कि फॉर्मूला इज 1 माइनस. सो दिस विल बी 0.1 माइनस s into 1 by s, s tending to 0, and servo closed loop transfer function which is 8 divided by 2s square plus 3s plus 9. वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, ऑफसेट सेम आएगा, है ना. s 0 0. So that becomes 0.1 minus 8 by 9. That is 0.9 minus 8 divided by 9. So आप calculate कर लीजिए इसको. 0.9. Let's do this. I'll report the value in decimals. So 8 divided by 9, and 0.1 minus minus 0.788. Okay. ठीक है. So s tending to 0, 8 by 2 square. ठीक है, that is the value of offset. Now I want to calculate omega d. So omega d was 1 minus zeta square. Zeta square will be 1 by 4 into 2, so that is 1 minus 1 by 8. 1 minus zeta square divided by plus minus zeta square minus 1 by tau. So zeta square divided by tau p, so that is root 2 divided by 3. So that is omega. And this comes out to be 1 divided by 8, and 1 minus that square root of answer, right, multiplied by 3 and divided by root 2, divided by root 2. It is coming out to be 1.98. आप एक बार चेक कर लेना आपकी क्या कैलकुलेशंस आ रही हैं. 1.984. The units are radian per unit time. So omega d is this, and then time period of oscillations are 2 pi by 1.984. ध्यान रखना कि आप पाई 180 नहीं डालना है, because this is in radian, this is in radian, this has to be in radian. So pi should be 3.14. So 2 multiplied by pi, right, that is 3.14 approximately. Or you can also use the pi from your calculators, that divided by 1.984.
So that comes out to be 3.1653 depending upon what are the units, right? What are the units of omega? If it is radian per minutes, it will be in minutes. If it is radian per second, this will be in second. So this is the time period of oscillations, right? So this is how you analyze a closed loop system. पीआई कंट्रोलर पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट जो भी क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे वो अल्टीमेटली सेकंड ऑर्डर के ही बनेंगे. थर्ड ऑर्डर की एनालिसिस करना मुश्किल होगा, है ना. आपके सिलेबस में भी हायर ऑर्डर में केवल सेकंड ऑर्डर ही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. यू कैन फाइंड ऑफसेट, यू कैन फाइंड this, like we found here, that what will be the zeta effective, what will be the tau effective, and then they can ask you to calculate the value of offset, etc. Right? So this was one problem on closed loop analysis. बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आपको गेट में मिलेंगी. Be careful. It is servo problem or regulatory problem, and accordingly which transfer function we have to use. ठीक है? And where most of the student make mistake, they make mistake while calculating the closed loop transfer function while doing some basic multiplications. Right? So this was one problem. Now you can see that there is one more problem I have taken. I've selected this one as well. So it says that a control system is shown below. Determine the variation of C with time for a unit step change in set point, and also they are asking that what is offset. Okay. So figure बना लेते हैं पहले. आप देखोगे यहाँ पे there is, okay fine, figure is there, okay, controller is there, okay, we have to find offset, we have to also find C with respect to time. मतलब आपसे इसने response भी पूछा है, response in the presence of controller. What is the response? Means if you are taking this, if you are calculating the response for unit step change in set point, आपको उसके बाद Laplace inverse लेके then you have to find the response. The response means I'm not talking about the value at t tending to infinity or t tending to 0. I'm talking about the equation. और इक्वेशन के लिए शॉर्टकट नहीं होगा. इक्वेशन के लिए फिर एक ही तरीका है, यू हैव टू टेक लैप्लास इनवर्स. ठीक है. सो द क्वेश्चन सेज, पहले फिगर बना लेते हैं. आर अगेन यू कैन सी दैट ऑल दीज ब्लॉक डायग्राम्स आर फीडबैक कंट्रोल लूप एंड सिंपल फीडबैक कंट्रोल लूप. सो नो नीड टू वरी. आप डायरेक्ट जो आपको रिलेशन बताया था पाई फॉरवर्ड बाई 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो आप यूज कर सकते हैं. 2/s+1. आप देखोगे कि लोड यहां पे प्रोसेस के पहले बना दिया है. अब जैसा क्वेश्चन आया हुआ है पुराना क्वेश्चन है, बट अगर ऐसा आ गया कि लोड को प्रोसेस के पहले बनाया, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको उसी हिसाब से सॉल्व करें. ठीक है. if you are facing any kind of if you are having any kind of second thoughts कि सर इसमें लोड is before the process, I may not get the same answer as we were getting before. Okay. In that case, you can use the basic method. अच्छा, this is a servo problem or regulatory problem. What do you think? Set point में change हो रहा है, then it is a servo problem. Sorry, अगर servo problem है, then there is no change in load. तो load यहाँ है, वहाँ है, क्या फर्क पड़ता है? Load change ही नहीं हो रहा. Okay, so this is a servo problem. No change in load or disturbance. So आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल के भी देख लेना. जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा C/R, that will be 2 into s+1 by s+4. There is no meaning of this now because this load change is 0, so its Laplace is also 0, its deviation variable is also 0. Load है ही नहीं, load change ही नहीं कर रहा. सर्वो प्रॉब्लम है. अगर ये डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम होती, देन आपको देखना पड़ता है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा. निकाल के चेक कर लेना आप. 2 into s+1 by s+4 divided by 1 plus. कई बार स्टूडेंट्स पेपर में क्या करता है, सी दे आर मल्टीप्लाइंग दिस. अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं रहता है, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रॉब्लम, देयर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट प्रॉपर, रात को ठीक से सो नहीं पाए, फिर इस तरह की गलतियां होती है. क्या दिल राइट C/RS दिस इनटू दिस, फिर बोलेंगे हो गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसके बाद आगे सॉल्व कर देंगे. ये नीचे 1 प्लस ये लिखना भूल जाते हैं क्योंकि दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और ये गलतियां तब होती हैं जब आपने रात को ठीक से नींद ना ली हो. s+4 फाइन. सो यू कैन टेक LCM and then twice into s+1 divided by s+4 plus twice s+1. ठीक है. s+4 plus twice s+1, that is equal to C/R. ठीक है. ओके. सो दैट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. क्या पता करना है, पहले ऑफसेट निकाल लेते हैं, जल्दी निकल जाएगा. ऑफसेट इज इक्वल टू unit step change in set point. So I'll write 1 minus s into
unit step change, so 1 by s into closed loop transfer function which is 2 of s plus 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ऑफसेट निकालने के लिए इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ना, लैप्लास इनवर्स लेना है, देन आई हैव टू रीअरेंज दिस मैथमेटिकली। ऑफसेट निकालने के लिए आप इसको ऐसे निकाल लो या इसको ओपन करके निकालो, सेम वैल्यू आएगी, डोंट वेस्ट योर टाइम। 2 into s plus 1, s plus 4 plus twice of s plus 1 and s tending to 0. This becomes 2, 1 minus the p कंट्रोलर है, कायदे से ऑफसेट आना चाहिए, and this becomes 0, so 4 plus 2, I think 6, ठीक है क्या? 0 plus 1 is 1, 1 into 2 is 2, 0 plus 4 plus 2 into 1, so that is 1 minus 1 by 3, so that is 2 by 3, ठीक है? 2 by 3 is the offset. Now the question says that what is the variation of c with time for a unit step change, means okay, first of all closed loop transfer function उसके लिए चाहिए होगा, ऑफसेट निकाल लिया, नोट कर लो, ठीक है? कई सारी प्रॉब्लम्स कर ली आपको ऑफसेट निकालने के लिए, अब ऑफसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना? नाउ वी नो दैट दिस इज c by r and rs is 1 by s, so cs is equal to 1 by s into 2 of s plus 1 divided by s plus 4 plus twice of s plus 1, ठीक है? दिस इज cs. नाउ वी हैव टू टेक लाप्लास इनवर्स, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि बनता क्या है पहले तो, है ना? द न्यूमरेटर इज 2 into s plus 1, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? द डिनोमिनेटर s into s plus 4 plus 2s plus 2, तो एडिशन है ना, एडिशन, लेट्स ऐड द s plus 2s becomes 3s, right? And okay, s plus 2 is 3s, okay, fine. This is 4 plus 2, so that is 6. So 3 can be taken out and this becomes s plus 2. So, and 1 by s is there, right? ये 1 by s यहीं पर है, ठीक है? That is 2 by 3. You have to find Laplace inverse of s plus 1 by s into s plus 2. अब पता करो इसका Laplace inverse क्या होगा। s plus 1 कैसे निकालोगे? क्या कर सकते हैं इसके लिए? s plus 1, first of all break it into partial fractions, so you can either use partial fractions, simple है, partial fraction से भी हो जाएगा, और कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैनिपुलेट करके फिर इसका पार्शियल आप इसका लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हो। लेट अस यूज द बेसिक मेथड व्हिच इज पार्शियल फ्रैक्शन, सो आई विल राइट s plus 1 by s into s plus 2 as both are linear factors, so a by s plus b by s plus 2, एलसीएम लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, s plus 1 is equal to a into s plus 2 plus bs, है ना? s को 0 पुट किया, तो ये 0 हो गया, this is 2a is equal to 1, so a is equal to 1 by 2. Now put s is equal to minus 2, this becomes 0, this is minus 2b is equal to minus 2 plus 1, so minus 2b is equal to minus 1, so I think b is equal to, just a minute, s को आपने 0 पुट किया, this 2a is equal to 1, so a is equal to 1 by 2, ठीक है? Put s is equal to minus 2, so this becomes 0, this is minus 2b and this is minus 2 plus 1, so minus 2b is equal to minus 1, तो यहाँ से b भी कितना आ रहा है? 1 by 2 आ रहा है, हाँ? Is it correct? So I think I can write this function as 2 by 3 Laplace inverse of 0.5 by s plus 0.5 by s plus 2. Now s plus 2 में आप 2 को कॉमन ले लोगे and this becomes s plus 2. No, this will be 1 by 2 in that case, okay. So that is 0.5 divided by s plus 2. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 by s plus है ना, हाँ, no problem. Okay, so now I can take Laplace inverse here, this will become 2 by 3, Laplace inverse of 0.5 by s, that is 0.5 plus, आप 0.5 को भी कॉमन ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। What is the Laplace inverse of 1 by s plus a, e raised to the power minus at, so plus 0.5 into e raised to the power minus 2t. आ गया रिस्पॉन्स, 0.5 को बाहर ले लो, सिंप्लीफाई कर लो। अब इसमें आपसे ये भी पूछ ले कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या वैल्यू होगी, when the time is 2, what is the response? You have given a unit step change in set point, what time the response will take to reach the 50% of its ultimate value, then put this is your response, put capital YT is equal to 0.5 of ultimate value of response. अब बोलोगे सर ultimate value of response कहाँ से मिलेगा? वो SYS S tending to 0 करके final value theorem से निकाल लो, then you can put here values and then you can calculate the time, or they can give you the time and ask you the response.
ठीक है, सो क्वेश्चन को आगे और आगे बढ़ाया जा सकता है. अगेन दिस वाज अ प्रॉब्लम ऑन क्लोज लूप एनालिसिस. लाइक दिस यू विल फाइंड सेवरल प्रॉब्लम्स इन गेट. किसी में कोई अलग सी बात आपको नहीं मिलेगी. द ओनली थिंग, राइट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन प्रॉपरली, solve the limits properly, take the Laplace inverse properly. यहीं पे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं. हाँ, sometimes it is possible you may get a kind of different kind of block diagram and then they ask you to calculate offset. तो वहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है. Don't directly apply the pi forward by 1 plus open loop. देख लो if you are feeling, if you are having a second thought कि नहीं सर शायद ये block diagram simple block diagram नहीं है, अलग आ सकता है, then use the basic method. Basic method is always there, it never fails, right? So this was about the closed loop analysis problem.